Roland Pinto. It's going to be a last quarter final, and wait and see which team will going to qualify for the semi-final of the prestigious tournament. Nitesh bowling away from us. Of course, the batter is not ready here. He's just examining the field set, but bowler is not really watching the batter. He tried to bowl that one, but quickly he is realizing batsman is not ready. Now everything is ready here now. Nitesh, right arm over the wicket balls. Outside the run of off stump. This time wicket keeper behind the stump. Completely missed out delivery from his hand. Sunil behind the stump. And of course that ball is just came along the carpet. And the batsman Prajwal tried to hit the ball on the offside region. Missed it completely. And there is no possibility of any run at all. Again, right arm over the wicket. Again, outside the line of leg stump, the mix-up, chance of run-out in the non-striker's end, and both the batsmen is in the same end. It's definitely going to be a disaster start. It's absolutely a disaster start for Yeyade Yoda. They lost their first wicket. A total misjudgment of the runs, and more than the misjudgment of the run is a communication gap between these two batsmen. They need to have some loud callings. Without calling, I think, is going for the risky run. You need to pay the penalty for that. The first wicket is back into pavilion. 0 for 1. Just I wanted to see it in replay what really happened in this previous delivery. Ball is almost pitching outside the line of a leg stump. Just I want to see it in a replay. Look at that one. Almost the ball is outside the line of a leg stump. See that the non-striker without calling he wanted to get the runs, but non-striker has lost his bat from the hand. That's why he's not interested for that run. But it's too late for the non-striker to come back to home in the non-striker's end. The first wicket is back into pavilion. New batsman in is Pritesh. Pritesh, correction. This time single is taken there by the new bat. So Prajwal picked up a single. It's a first run now for Yeyade Yoda. Of course, Yoda in the sense is a soldiers. They need to play like a soldiers if they wanted to be in the semi-final of this prestigious cricket tournament, Nehru Cup 2022. Each and every team which is participating in this wonderful tournament, they wanted to be in the big final of this prestigious tournament. Here is the next one. Right over the wicket, letting that one very hard, down to deep mid-wicket region, long chase here for the fielder, before the fielder from deep long on to run across his right towards the deep mid-wicket region. Ample time for the batsman to complete that couple of runs. Not quite control over that stroke. Of course, the intention of the batsman to hit the ball down to long on region, but seeing that he's a little bit early into the stroke, ball which is late, came very late to the bat, and he got power behind the stroke. That's why he got a couple of runs down to deep mid-wicket. With that couple of runs, Coburn moves on to 3 on the board without loss of any wicket. This time slashes that one hard into the over the top of the cow point fielder, and before the fielder from deep extra cover, run across, they're coming back for a second. Chance of run out, and umpire's call like umpire Mohan Yeyade. He says not out, but everyone is asking umpire to give the addition for the third umpire. Now at last, Mohan Yeyade acknowledging the appeal of the field of the players, then he's asking for the third umpire. Now third umpire Sriraj will go in to examine whether it's out or not out. Of course, with the technician of Bedra Media, definitely is a very experienced technician we have, and proprietor himself, Irfan, will going to provide every angles which is possible to get the best result of this run out. It's definitely going to be a touch and go. It's definitely going to be a touch and go because of the batsman running hard for the second, and when throw is just came from the deep backward point region, and the batsman tried to reach that home, but we have to see that whether the batsman made his home or not. Definitely the team Yoda doesn't want to see that third umpire will going to give the red light. There's no red light in fact, but doesn't want to see that the third umpire will going to give the out. But at the same time, the players of the fielding team, suddenly they are eyeing over our commentary box, need to see that whether it's out or not. Now out is a signal coming from umpire. This is a quite unfortunate dismiss because I want to explain what really happened here. The bat which is stuck, which is I think is a reaper which is situated in that batting crease, little bit over the ground level. So when you try to drag the bat, bat is just stuck into that reaper, and that's why he couldn't manage to reach that
is at home. That's why a little bit confusion for the square leg umpire as well. So rightly so, he's called for the third umpire, and the result which is goes in favor of a fielding team. That's all happening in cricket. Some luck and luck is which is definitely required for the team. We wanted to qualify for the semi-final, but unfortunately for ARD Yodha, they lost one more Yodha out of 11 soldiers. They lost 2 Yodhas very early. In the first over itself, they lost 2 soldiers back into pavilion. Again. This time pushing that one out, cover point region. They're going for the run, chance of run out. Again, it's definitely going to be a disaster. Definitely going to be a disaster if it's going to be one more wicket in the form of run out. But this time batsmen are too quick between the wicket, so that they completed that single. So after completion of over number 2, definitely it was a shackling start, but it's very good start here for United Ashok Nagar after winning the toss, elected to field first. I think the owner Chetan must be very pleased with the performance. The owner just watching this match in our right of our commentary box, along with the legendary player, one of the century getter, Sridhar Ranna of Vijay Lakshmi Cricketers, enjoying the game of cricket here in the commentary box. Now, Rakesh Devadiga, the main pillar of this wonderful cricket tournament, Nehru Cup, definitely is the owner of ARD Yodha. He must be watching how his 11 soldiers will going to perform in this particular tournament in the match, particular quarter-final match. He wanted to see his team in the semi-final. Wait and see what will going to happen here. So, from the far end, Pramod brought into attack. Right arm over the wicket, delivers. That was a sensible batting, absolutely sensible batting. That's the kind of batting which is required when you lost 2 quick wickets. They need to consolidate the innings. They need to anchor the innings. For that, little bit of patience which is required from the batters of Yodha. They need to anchor the innings. They need to pick some runs in the form of rotating the strikes here and there. And wait and see. Now, Prajwal will go into face. This is all going to be a bonus run for ARD Yodha. They will going to enjoy each and every extra which is conceded by the bowler. And with the addition of that single score, now moves on to 7 on the board for the loss of 2 wicket. Right arm. Again, outside the run of exam, going to be a one more bonus. 1 plus 1, 2 run. So disaster for the fielding team when the things are going very well. They have just lost the grip, the momentum, because of the bowler ball 2 consecutive wide balls, then 1 plus 1, 2 wides, then score, but now moves on to 9 for the loss of 2 wicket. Now, Pramod from the far end, searching for the right line. Now, mid-off fielder, of course, long-off fielder coming inside the ring towards the mid-off, and a deep extra cover, of course, in the right position. There is a deep long on, the 2 and a deep mid-wicket is there, and 1 a deep backward square leg. Again, a beautifully bowled, a slower one. The batsman, of course, just waiting for the ball to coming into his bat, but couldn't manage to get any kind of placement. Then he plays back to bowler, and there is no chance of any run. Score stationed at 9 for the loss of 2 wicket. Laudable is gone, flum in front of wicket. It's absolutely a flum in front of wicket. The batsman little bit shuffled across the line of the delivery. That was a straighter one, and batsman little bit shuffled and finding himself right in front of middle stump. The wicket number 3 is back into pavilion of ARD Yodha. They are looking in a deep trouble now. 9 for the loss of 3 wicket. The winners of this match will go into play against Dongarakere Challengers. Already they qualified for the semi-final of this prestigious Nehru Cup 2022. There are another 2 teams which is qualified for the semi-final. Bandar Brigades takes on Rising Stars, and that will be the first semi-final of this Nehru Cup 2022. Meanwhile, left-hand batsman just came into middle. Lloydan.
Lloyd, and this time wanted to place the ball onto cover region. Again, the ball is not really coming to the bat. It's not an easy condition under floodlight. Different condition if the playing in a natural sunlight and playing under floodlight here in UCG cricket ground. And again, a lovely delivery. Good comeback here by the bowler after he's little bit lost his concentration over the line. Once he got the right line, he's looked very confident. And just a single run and one or two wides in that over and then one single. This time beautifully driven. Straight down the ground, down to deep long on, but not more than a single. Good piece of fielding there by the fielder. And the addition of that single. One more over is completed after completion of over number 2. Searching for the right track. And Yoda managed to score 10 at the rate of exactly 5 runs per over. A lot of conversation is going on. Of course, they got some legendary player in the side of Ashok Nagar. We are talking about this man, Srishant. Of course, Srishant looks like he's got a ball in his hand. He's the one who taken a spectacular catch, one of the best catch of the tournament that already gone viral in social media. What a fantastic effort. Even under this age, that kind of commitment, diving full and dive to his right to take that catch, which is taken at a short extra cover region. Outstanding effort from Srishant. Srishant. The mastermind of Underarm cricket. The first he was represented Sneha Malamar. Then he represents Vishal Kodikal in a big format of games. Vishal Kodikal, one of the top ranking team in 30-over format of game, RRPI Memorial UFC trophy. The Srishant is the one who really the mastermind of Vishal Kodikal. We'll go into ball and wait and see how he'll going to contribute here from the commentary box end. This time bowler's back drive, not quite getting hold of that and properly, but he managed to pick the single down to deep long on. So with that single, scoreboard numbers on to 11 for the loss of 3 wicket. 11 for the loss of 3 wicket. What outstanding cricket tournament is going on in this most beautiful historical UCG cricket ground. Of course, famously known as Kashi of Underarm cricket. And it's been definitely going to be a big honor for any players to come and perform. And especially in the tournament like this, Nehru Cup 2022. Outstanding tournament organized in this most beautiful venue. Srishant. Now over the wicket. Lekatar lofted at one. Not enough power in that stroke, but deep long on fielder making no mistake at all. The half-hearted hit coming from the blade of the batter. Of course, it was a Lekatar short pitch one, but he's not really choosing a right area to hit the short pitch delivery. And a deep long on fielder making no mistake at all. The wicket number 4, which is back into pavilion of Yodha. Now the Yodha are in deep trouble. They lost 4 valuable wickets for just 11 runs. That's only because of disciplined bowling performance by the bowler of Ashok Nagar, United Ashok Nagar. Puneet is a new batsman, slowly walking towards the middle. Over number 3 in progress. I requested 2 captains, 2 teams to report here. The first semi-final, Bandar Brigades as well as Rising Stars, all the players kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Yes, we needed some cooperation from you. And again, full toss delivery. And the batsman oh, there's a mix-up, absolutely mix-up. One more disaster. One more disaster here for Yadi Yodha. Again, there is no understanding between the wicket. And I think nothing wrong with that call from the striker. There is no chance at all for the second run. But the player, the batsman, non-striker, almost is turning out for the second run without seeing the ball. And he just pays the penalty for that. It's not really good going here, actually. They're just feeling the pressure of the quarter-final match. It's a completely different game compared to what you're playing in the first round and second round. More than the physical game, it's a mind game. Handling the pressure is so important. But so far, looks like
the batters of ARD Yoda not really able to handle the pressure. That's what we're having 2 runouts in their dismissals. 3 runouts altogether. 3 runouts. It's definitely going to be a disaster for ARD Yoda. But still, they can bounce back here. Needed some sensible batting and need to anchor the innings. Of course, these 2 batter, left and right combination. The new batter, Dikshit, is in non-strikers end. And Lloyden will go into face next delivery from Trishant. Nice looking drive. And just playing that one at the merit of that delivery. They plays it left of the bowler to pick the single then. Last 2 deliveries left in that over. So scoreboard is slowly moving. It's not a good progress here for ARD Yoda. Just a 12 on the board for the loss of 5 wicket. 13, let me correction. 13 on the board. 13 for the loss of 5 wicket. For the loss of a 5 wicket over number 3 in progress. Trishant making some adjustment in the field. The 2 closing fielders, silly mid on and silly mid wicket. Out there very close to the batter. Again down the leg stump. It's going to be a delivery, but umpire is not interested, rightly so. Batsman shuffled across the line of the delivery. And rightly so, umpire Roland Pinto is not interested to call that wide. It was a fair delivery. Trishant. Right arm over the wicket. Oh, again, excellent leg cutter, but batsman quite dangerously played, but safely played down to deep extra cover region, out of the reach of the fielder and deep extra cover. One more good over is comes in, and Trishant just providing the over which is definitely required as far the experience is concerned. Being the experience is not that much of important, but converting that experience into performance is so important here for Trishant, and he once again justifying and bowled beautifully. So 3 overs completed after completion of over number 3. It's 14 for the loss of 5 wicket. Now 3 overs remaining. Wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. So before the next over going to start, it's over to once again Kaif to take over the microphone. Thank you. Thank you, Satish. What a match we're witnessing. The last quarter-final of Nehru Cup 2022. Yayadi Yodhas taking on United Ashok Nagara. United Ashok Nagara, after winning the toss, elected to field. What a good decision coming from the captaincy of United Ashok Nagara. Once again, it's a direct hit. Appeal for the run out. Empire unmoved. It's a 3rd umpire. Another. If the wicket goes down, it will be a big disaster for Yayadi Yodhas. They will be in a big trouble because they have just crossed 3 overs and tried to score 15 valuable runs for the loss of 5 valuable wickets. And the umpire's decision is not out. The batsman gets a life at the center. What a big quarter-final. Let's see if Yayadi Yodhas want to defend a target against United Ashok Nagara. They still need around 15 to 20 more runs to defend under this lights, because it will be a defending total for United Ashok Nagara. So let's see what can this match go either in the hands of Yayadi Yodhas, if they can do some miracle from the blades, or can United Ashok Nagara chase the target from Yayadi Yodhas. The 2 batsmen still at the center, Lloyd and Dikshit. Lloyd striking in just singles.
not going for the big hits. Sunil on the bowling mark. Once again, another dotted delivery. Scoreboard still remains on 15 on the board. Fourth over in progress. Sunil, third time in this over. Once again, the ball going down to the fence. Can they get for another 2 runs? Slide fumbling in, and it's a run out. Another wicket falls for Yayadi Yodhas. I can see the smile in the owner's face of United Ashok Nagara, Mr. Chetan. Yayadi Yodhas owner getting a frustration in the pavilion, Mr. Rakesh Devadiga. And a slight support. And we can see the owner of Yayadi Yodhas at the center. Mr. Rakesh Devadiga, the backbone of this Nehru Cup 2022. I can see the spectators cheering him up. Let's see what can the owner of Yayadi Yodhas, Mr. Rakesh Devadiga, can do. Some miracle for his team. We have still the dignitaries watching this match. The youths are watching this big tournament. Sunil bowling from Bharat Jodo Yatra to the owner of Yayadi Yodhas, Mr. Rakesh Devadiga. Sunil, fourth time in this over, bowling to Rakesh. And Rakesh reverse sweeps, gets a single run. He is off the mark. The total moves on to 17 on the board for the loss of 6 valuable wickets. Very good spectators here at Urwa ground watching this big tournament, Nehru Cup 2022. Sunil, fifth time in this over, bowling to Dikshit. Once again, a very good single taken from Rakesh. A very good running between the wickets, and it's a leg byes. The scoreboard moves on to 18 runs on the board. Fourth over in progress. Still more 13 deliveries left for Yayadi Yodhas to do some miracle. Sunil, last time in this over, bowling to Rakesh. Once again, Rakesh sweeps, gets a single run comfortable. Trying for the second but not getting it up. After the completion of 4 overs, Yayadi Yodhas have tried to score 19 runs for the loss of 6 valuable wickets. I request the first semi-final team, Miss Bandar Brigades, taking on Rising Stars Urwa, to please report to the commentary dais for the sign. The organizers are waiting for your signature because we are lacking back of time. We need still more. We have 4 matches after this match. Please do cooperate with us. We have the big exhibition match after the 2 semi-finals between City North Block will be taking on South Block. That's just before the big final of Nehru Cup 2022. And we have lots of backbones who have supported this tournament behind Prakash Visalian and Rakesh Devadiga. Mr. Sunil Pujari is the president of South Block Congress, supported for this tournament Mr. Rajneesh, who is supporting this tournament, as well as Chetan Clifford, Mr. Vinay Raj, the another backbone for this tournament. We have a lot of big support from Mr. Mithun Rai, the youth icon for all the youths of Dakshina Kannada, who has shown us what youth can do in this ample of time. We have
the support from Inayat Ali Mulki. Coming back to the match, Mr. Trishant, the ball in the air. And the owner, Mr. Rakesh Devadiga, back into the pavilion. Losing 7th wicket. Big trouble in the big quarterfinal. If they can win this match, they will be playing against Dongarikere challengers. The winners of this will be taking on the second semi-finalist, that is Dongarikere challengers. I request Rising Stars, Urwa, to please report to the commentary dais as soon as possible. All the players of Rising Stars, Urwa, please report to the commentary dais for the sign. Harish will be replacing Rakesh Devadiga. What a performance from Trishant. He was representing Sneha Malemar. Then Vishal Kodikal. Today I can see him in the team of United Ashok Nagara. Trishant, the second time in this over. Let's see what miracle. Another slide and slight fumble from Trishant. And with that fumble, batsman get 1+1. Slight fumble gets a 1 run extra. With that extra, the total moves under 21 on the board. 21. This is the cricket. It's unpredictable. It can go any side to the any team at the any time of the moment. Because last we had seen a quarterfinal. Once again, a very good delivery. Gets a single run comfortable. With that single, the total moves on to 22. Fifth over in progress for United Ashok Nagara. Should see what United Ashok Nagara can do for Yayadi Yodhas to restrict in the better score so that they can easily chase down the target and enter the semi-final of this tournament. What a tournament organized. Trishant, the batsman going for the reverse sweep, not getting any run. It's another dotted delivery. Dikshit. Trishant on the bowling mark, bowling to Dikshit. The score still remains on 22 runs for the loss of 7 valuable wickets of Yayadi Yodhas. The batsman coming down to the fence, just getting a single run comfortable. After the completion of 5 overs, Yayadi Yodhas have tried to score 23 runs, 23 for the loss of 7 valuable wickets. They have just 6 more deliveries left in the innings. Another 6 more deliveries. If they score at least 10 runs, they can give a fighting target for United Ashok Nagara under this Urwa cricket ground lights. What a match. It can go either sides because another 6 deliveries can change something for Yayadi Yodhas to bounce back in this big quarter-final and qualify for the semi-final. Still the dignitaries of Congress committee getting in this tournament to witness the big matches. The next there will be 2 semi-finals. After that there will be an exhibition match between the 2 blocks. Then the big final here at Urwa ground. Bharat the bowler. Once again a very good delivery from Bharat. Can United Ashok Nagara restrict
Yayadi Yodas. It's a big question. Let's see what can the batsmen of Yayadi Yodas do. Bharat, second time in this over. The ball in the air, going down to the field, and it's a mighty six to the banner of Vinay Raj. Straight to the banner of AC Vinay Raj. What a mighty hit. As I told you before, in just 6 deliveries, if they can score the 10 runs, they can give something of fighting total for United Ashok Nagara. It's a great mighty six from the blade of Dikshit. What a match. What a turning situation in the last over. Because it was, the match was in the hands of United Ashok Nagar. I can see the body language of Yayadi Yodas. The batsman going for the reverse sweep. Again, a slight fumble. Once again, a run out. We could have seen almost 5 run outs in this match, in this big quarter-final match. The scoreboard has moved on to 29 runs. Still, 3 more deliveries left. If they can get another 3 deliveries, at least 5 to 6 runs, they can bounce back in this big quarter-final and give a fighting total for United Ashok Nagara. So, the next big match coming up, it's between Bandar Brigades taking on Rising Stars Urwa. Let's see what can these do in another 3 more deliveries of United Ashok Nagara. Can Yayadi Yodas bounce back in these 3 deliveries? Can they give us something of fighting total for United Ashok Nagar? Once again, ball going down to the fence and getting up a single run. With that single, the total moves on to 30 valuable runs. Something for Yayadi Yodas to bounce back in this tournament, in this big quarter-final. And I can see Trishant setting up the field atmosphere for United Ashok Nagara, because at one point of time the match was in the hands of United Ashok Nagara. As I told you, cricket is unpredictable. The match could go any side of the tournament. Once again, the ball in the air. Fielder getting underneath and takes a catch. The 9th wicket falls for Yayadi Yodas for the valuable runs of just 30 runs. The last wicket for Yayadi Yodas at the center. Still 2 more deliveries to go. Last delivery to go. In one delivery, if they can score a 6, a 4, or a 2, or a single, can give a something for Yayadi Yodas to bounce back in this big quarter-final. Bharat on the bowling mark. Nitesh. I can see the tail enders now batting up. Bharat the bowler. Nitesh the batsman. Can Nitesh do something for Yayadi Yodas? And the ball going down to the fence. And it's a welcome boundary. And it's a welcome boundary for Yayadi Yodas. Yes, they have. I could see they have bounced back in this match and given a mighty target of 35 runs for United Ashok Nagara. And as I told you, in the last over, in 6 deliveries, they have tried to score 11 runs, which gets Yayadi Yodas a comfortable total to bounce back in this tournament and restrict United Ashok Nagara and qualify to play
play against Dongarikere challengers. So next I would like to call with upon no water. Mr. Syed A school Guru with no Kamla schooling. for the commentary. And The harsh reality slight of life for the Soliga tribals of from the Karnataka's organizers, Chamarajanagar district in Maguvinahallി on the decision outskirts of Bandipur Tiger Reserve. Living on the edge of the forest comes with its challenges. ಇಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ತಾವೆ, ಅವು ಮೇಯ್ಕೋಯ್ತಾವೆ ಓಸಿ, ಅವು ತಿಂದ ಉಳ್ದವ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆನೆದೊಂದು ಭಯ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನು ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನೆ ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೋದ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಎಂತ ತಂದು ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಡು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಸಿರ್ತ ಭಯ, ಹುಲಿ ಭಯ, ಆನ ಭಯ ಅಂತಾರ. ಸರ್ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ Once again, its core idea of taking everyone along, even India's indigenous people. ಮಳೆ ಬಂದ ದೇವ ಮಾನಿನಗ ಸಾಲು ಮರಿದಾರ. The Bharat Jodo Yatra's Karnataka lap began with underlining once again its core idea of taking everyone along, even India's indigenous people. ಬ್ಯಾಟ ತೀಳೋ ಬೆವರು ತೊಡೋದಾಳ, ಮಳೆ ಬಂದ ದೇವ ಮಾನಿನಗ ಸಾಲು ಮರಿದಾರ.
त्रिशांत, ये क्या शॉट है, अजीबोगरीब शॉट खेलते हैं त्रिशांत। कहीं क्रिकेट प्लेयरों को पीछे ढकेल दिया था त्रिशांत ने। आज के दिन कहते हैं कार्बन कमाल कैच, लेकिन यहां पर नेहरू कमाल कैच पकड़ा है सुबह में। लेकिन इस बार भी वही काम करते हुए बैटिंग पर, पिछली बार फील्डिंग में, इस बार बैटिंग में। टोटल टीम का स्कोर बन चुका है 11 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छा स्ट्रोक, पीछे फील्डर है, एक से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए निश्चित रूप से। जी हां, एक बार फिर से तो अच्छा तरीका यहां पर अपनाते हुए टोटल टीम का स्कोर बन चुका है 12 रन। त्रिशांत और प्रसन्ना अपनी पारी को मद्देनजर रखते हुए सिंगल जबल लेते हुए अपनी मंजिल को नजदीक लाने की पूरी कोशिश करते हुए। ये देखिए किस तरीके से क्लिक किया है, गेंद को पैर पर आ रही थी, गेंद पूरी तरीके से गेंद को रोक लिया, सही टाइमिंग में फील्डिंग भी करने का पूरा मौका। वहां पर फील्डर के पीछे एक और रन सिंगल चुराते हुए। अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरा गेंद पर सिंगल। तो सिंगल्स लेते लेते आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बड़ी शॉट की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले ही ओवर में रन आ चुका था और उसके बाद सेकेंड ओवर में सिंगल्स डबल ले रहे हैं। यो क्या शॉट है, ये क्या शॉट है, जीत की पूरी कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में। जी हां, कहते हैं यस बैंक मैक्सिमम, लेकिन इस बार जबरदस्त छक्का, मौके पे चौका, मौके पे छक्का, मौके पे विकेट। तो पूरी तरीके से अशोकनगर के लिए पूरा फायदा। जबरदस्त है ये टोटल स्कोर। जी हां, बुलेट ट्रेन की तरह यानी कि इंडियन टैक्सी मीटर की तरह 17 यानी कि 17 पे खतरा। अभी तक गेंदबाजी के लिए खतरा है जो इस वक्त प्रसन्ना और उनके साथी त्रिशांत बनाए रखे हैं। तो चलिए गेंद को लेकर तैयार, वापस बेहतरीन गेंद, इस बार कोई गलती नहीं। आखिरकार बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, इसका मतलब है विकेट जा चुका है। विकेट नंबर 1, ओवर नंबर 2, स्कोर नंबर 17 यानी कि 17। बहुत अच्छी गेंद। ये हाँ, त्रिशांत चिल्ला रहे हैं भैया हम क्यों ना नो लॉस जीते, लेकिन भारत के सामने इंग्लैंड जरूर जीता है, लेकिन अगले साल बताएंगे कि इंडिया का दम कितना है। लेकिन फिर भी चलते हैं मैच के पास। तो इस वक्त टोटल स्कोर बन चुका है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप T20 इंग्लैंड ने अपने घर ले जा चुके हैं, T20 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो आज नेहरू कप की ट्रॉफी किसके घर जाएगी ये देखने के लिए अभी भी कुछ क्षण बाकी है और कुछ मिनट्स, कुछ घंटे बाकी हैं। देखेंगे जो जीता वही सिकंदर। इस मैदान की पहली साल की जबरदस्त ट्रॉफी देखिए किस तरीके से कौन पाएगा, किसके हाथ जाएगी, किसके घर जाएगी, किसके शौके में जाकर वो खूबसूरत ट्रॉफी रखी जा सकती है। तो चलिए मैच की इस ओवर की अभी भी 1 गेंद बचा है। प्रशांत देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं अगले मैच की तैयारी में। अच्छी गेंद, एक बार और रन चुराया, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 18 रन बन चुके हैं 2 ओवर के होने के बाद। पहला ओवर दीक्षित, पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 8। टोटल टीम का स्कोर है 18। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी प्रसन्ना का स्थान भरने के लिए तिलक। तो टोटल टारगेट 35 इज ऑलरेडी एंड ऑफ द ओवर नंबर 2 एंड टोटल स्कोर मुजाम टू 18। काफी लोग जुड़े हुए हैं नेहरू जी के नेतृत्व में। सभी के निगाहें इस टूर्नामेंट के ऊपर, सभी के निगाहें यूट्यूब चैनल बेदरा मीडिया के ऊपर। आप देख सकते हैं, अपना स्मार्टफोन निकालकर इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और इस टूर्नामेंट का नाम डालकर आप उस मैच को देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट चला है। सुबह ठीक 9:50 पर जब शुरू हुई श्रृंखला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी कब तकरीबन मैचेस है। अब देखना होगा कितने मैच और बाकी है और कितना कौन टीम फाइनल आ रही है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक और मजा आएगा। अभी भी 2-3 मैचेस और जबरदस्त इंटरेस्ट रोचक मैच होंगे।
तो चलिए तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है प्रशांत। ओवर फेंकने के बाद अब नए गेंदबाज तिलक बल्लेबाजी पे नए हैं, क्योंकि प्रसन्न आउट होने के बाद त्रिशांत अभी तक सलामी बल्लेबाज के रूप से क्रीज पर रुक चुके हैं। स्ट्राइक लेंगे तिलक। प्रीतेश, स्क्वायर लेग अंपायरिंग के लिए मोहन एआरडी, और अपनी एआरडी की टीम ही खेल रही है तो उसमें कोई दौराए नहीं, क्योंकि मोहन एआरडी अंपायर है, स्क्वायर लेग अंपायर। माइन अंपायरिंग के लिए रोलैंड पिंटो सर, जो कि इस वक्त बढ़िया साइलेंट अंपायर माने जाते हैं उर्वा मैदान के। और मिसफील्ड, ऑलरेडी पहले ही मिसफील्ड, थोड़ा स्कोर बनाया है एआरडी ने। समझ नहीं पा रहे हैं, पहला मैच बहुत अच्छी खेली थी, बहुत अच्छा खेला था एआरडी के सभी यंग बॉयज ने, लेकिन पता नहीं कि शायद ये मैच में क्या हुआ है, बैटिंग कुछ हुआ नहीं है, बल्लेबाजी पे को तो रन नहीं बनाया है, विकेट टू विकेट जा रहे थे, स्लो खेल रहे थे, रन नहीं बन रहा था। लेकिन 35 स्कोर कोई मायने नहीं रखता, 35 स्कोर बहुत स्लो है। लेकिन इस बार भी देखना है, कट करने की कोशिश, जी हाँ, कोई रन नहीं, बड़े आराम से गेंद डॉट हुआ है। तो अभी तक त्रिशांत संभल कर खेल रहे हैं। टोटल स्कोर बन चुका है 19-19 ऑन द बोर्ड। और जोरदार अपील, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली आसमान में, इसका मतलब है गेंद लगी है फ्लैम विकेट पे। चलिए बल्लेबाज डगआउट पे, चलिए आखिरकार त्रिशांत का विकेट चला गया। कहते हैं अंपायर के पास वो तजुर्बा है, कितनी भी नाइट हो, कितना भी डे हो, आउट देना तो दे ही जाते हैं। रोलैंड पिंटो सर, क्लीन प्लम, और इसी के साथ चलते बने त्रिशांत अपनी डगआउट पे। चलिए विकेट नंबर 2, स्कोर नंबर 19, ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है 3, तो चांस यहां पर बनने की कोशिश ब्लू जर्सी के साथ। अशोक नगर के ओनर तो शायद खुश है, टारगेट कम है भैया, मैच में कुछ भी हो सकता है। लगातार अगर डॉट करते जाएंगे, विकेट लेते जाएंगे, तो शायद कहानी यहां भी समाप्त हो सकती है अशोक नगरा की। लेकिन जहां तक स्कोर का सवाल है, टोटल बने हैं 19, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरकार दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट पे, त्रिशांत और प्रसन्ना। 2 बाउंड्री लगाई प्रसन्ना ने, उसके बाद त्रिशांत सिंगल डबल लगाकर स्ट्रोक बनाकर अपनी टीम को जीवित रखा है। तो चलिए अभी भी इस ओवर की गेंद लेकर तैयार है प्रीतेश। कट किया, गली पे फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन से कोई नहीं रोक पाएगा। दूधिया प्रकाश से नहाता हुआ ये मैदान, क्या सफेद पिच बनाया है, क्या लाल मिट्टी का पिच बनाया है, क्या जबरदस्त रोचक स्थिति को बनाया है। आज के दिन सुबह शुरू हुआ मैच, लगातार मैचों की कहानी हम बता रहे हैं आपको। एक और अपील करते करते सिंगल रन दे दिया, 1 रन और मिला। जी हाँ, थोड़ा सा बाहर से फील्ड सेट हो रही है। एआरडी के बल्लेबाजों को समझाया, गेंदबाजों को माफ कीजिएगा, गेंदबाजों को, फील्डरों को समझाया जा रहा है। अच्छी गेंद और मिसफील्ड, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बन चुका है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी बचा हुआ 18 गेंदें, तो 18 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन की जरूरत है। 13 रन रिक्वायर्ड, 18 बॉल्स। अगर एक अच्छा ओवर अगर घट गया तो शायद अशोक नगर के लिए सर दर्द बन सकता है। एक पहली या सेकेंड या थर्ड रन अगर रोका, अगर उस ओवर में, इस ओवर में 1-2 रन सिर्फ देकर 2 विकेट अगर ले लिया तो मैच कांटेदार हो सकता है। सतीश सालियन भी मौजूद है, उसके बाद में हमारे साथ चंद्रप्पा बेलतंगड़ी के और भी कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या आला टूर्नामेंट बनाया है, क्या आला मैच को बनाया है। तो अभी भी एआरडी के लिए सोचने की बात है कि हम विकेट लेना जरूरी,
2 wicket loss. Score Mozambique total 22 on the board for loss of 2 wickets. 3 over यानी कि 18 बॉल रिमेनिंग, 13 रन रिक्वायर्ड. तो सब कुछ यहां पर है. गेंदबाजी में प्रशांत, जिन्होंने सेकेंड ओवर डाला था, तो सेकेंड ओवर में 8 रन दिया था. अपना ये दूसरा स्पेल, पहले स्पेल में 8 रन देकर विकेट तो उन्होंने 1 विकेट ले लिया, वो भी प्रसन्ना का. जी हाँ, बाहर से देखिए तैयारी हो रही है. सिंगल ले लो, सिंगल. जी हाँ, होता है, क्रिकेट है भैया, कुछ भी हो सकता है. विकेट भी मिल सकती है, रन भी हो सकता है. कुछ ना कुछ तो हासिल करना जरूरी है एआरडी के लिए. जी हाँ, चलिए, बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए भी. गेंद अच्छी थी, चांस. जी नहीं, क्या कर सकते हैं आप. अगर ऐसा मिस करेंगे तो आप मैच को कैसे ला सकते हैं. आप कते ही ऐसी फील्डिंग नहीं कर सकते. आपके हाथ में आ रहा है मैच, तो आप उस मैच को छोड़ रहे हैं. अगर ये रन रोकते तो शायद अगला गेंद डॉट होता, तो नेक्स्ट गेंद पर विकेट मिल सकती थी. ये सब क्रिकेट की बात है. तो जहां पे जिसको जीत मिलना है उसको मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करते रहना है. आप कोशिश करेंगे तो वो जो अपना मंजिल है आराम से पा सकते हैं. चलिए, पहली गेंद पर पहला रन जो गेंदबाज हैं प्रशांत, बल्लेबाजी पर सुनील और उनके साथी तिलक. भारत जोड़ो यात्रा एंड से गेंद को लेकर तैयार है. ये अच्छी गेंद है, लेकिन फील्डर पीछे है. वाओ, ये फील्डिंग चाहिए, ये डॉट चाहिए. ऐसे डॉट की जरूरत है यहां पर. शायद पिछले बार बदकिस्मत से वो रन मिला, लेकिन एआरडी की गेंदबाज अभी भी बहुत चालाक है. अपील, जी हां, जोरदार अपील. लेकिन अंपायर भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, कच्ची गोटी खेली नहीं है वहां पर. मोहन एआरडी अंपायर जो इस वक्त माइन अंपायरिंग का काम संभाल रहे हैं. प्रशांत गेंदबाजी पर इस बार भी 1 रन, कोई बात नहीं, बड़े आराम से 1 रन. साफ सुथरा मैदान, ग्रीन गार्डन, आप देख सकते हैं हरे भरे पेड़ जब सुबह दिख रहे थे, लेकिन इस वक्त वही चमकाहट, दूधियार प्रकाश से नहाता हुआ ये मैदान काफी खूबसूरत है. और ये नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसफील्ड किया. गेंद बाउंड्री के नजदीक जा रही है. 2 रन बड़े आराम से दौड़कर पूरा कर लिया है. इस बार भी 2 रन. तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टोटल 27. ये गेंद डॉट होना जरूरी है. 8 रन की जरूरत है. बचे हुए 13 गेंदे, ये गेंद डॉट होना जरूरी है. ओह क्या गेंद है ये, जबरदस्त गेंदबाजी. सीधा विकेट को चुम्मा देकर चली गई ये गेंद. एक और विकेट की सफलता. विकेट नंबर 3 goes. एंड ऑफ द ओवर नंबर 4 एंड टोटल स्कोर Mozambique to 27 on the board. अभी भी बचे हुए 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए चाहिए 8 रन रिक्वायर्ड, 12 बॉल लेफ्ट. तो दीक्षित पहला ओवर, सेकेंड ओवर प्रशांत, थर्ड ओवर वापस प्रशांत, प्रतीक्ष के बाद उसके बाद 4th ओवर वापस प्रशांत. तो इस ओवर में स्कोर बना है सिर्फ 5 रन. दिस ओवर 5 रन. क्या मैच है, क्या कांटेदार मैच है ये. डॉट करना होगा विकेट को किसी भी हालत पर. बचे हुए 12 गेंदे, जीतने के लिए चाहिए 8 रन. 12 ಎಸೆದ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ अशोक नगर के लिए. कि हाँ, पावर प्ले पूरा तैयारी में. बैटिंग पावर प्ले, मौका बैटिंग के लिए एक चांस. फील्डर सर्कल के बाहर आप देख सकते हैं सब ब्लू जर्सी डालकर अपने अशोक नगर टीम को रोकने के लिए तैयार है. एक बड़ा शॉट तो मैच खत्म, 2 विकेट तो मैच इज बैक. तो ये सब क्रिकेट में कहानी अभी भी ट्विस्ट है. 1 विकेट की जरूरत है. अगर इस ओवर में कहीं ना कहीं 2 रन या 3 रन देकर 1-2 विकेट लेंगे तो मैच कवर हो सकता है, मैच आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. चलिए, इसलिए नाम कहते हैं
जो जीता वही सिकंदर। अशोकनगर के लिए चाहिए 12 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। 8 रन इन आवश्यकता है, 12 ಎಸೆತ। हालांकि आप देख सकते हैं 12 बॉल 18 रन रिक्वायर्ड। व्हाट इंटरेस्टिंग मैच। इस गेंद पर क्या होगा? और ये तो शॉट बहुत ही अच्छा है। इस पे कम से कम 2 रन मिलने चाहिए। 2 रन मिल गए हैं, 6 रन की और दरकार। एआरडी करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। 2-3 मिसफील्ड, लेकिन फिर भी कोशिश तो जारी। और बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन रोकने की पूरी कोशिश किसी भी कीमत पर। सबसे बड़ी जीत कोशिश की है। किसी के पास कोशिश है वो कभी हार नहीं सकते। ये देखो चांस ऑफ द कैच। चांस था यहां पर, डाई लगाई। जी हां, बरकरार है कोशिश हर गेंद पर रन को रोकने की। क्या होगा? आज इंग्लैंड सुकून की नींद सो रही है, लेकिन नेहरू कप जो जीतेगा वो 2 दिन तक नींद से नहीं उठेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि चलिए इस बार, ओ बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। चांस। क्या होगा? ये ताड़ अंपायर है। जी हां, ताड़ अंपायर है ये। अब एआईडी के सभी फील्डर नाखून चापने शुरू हो जाएंगे। क्या विकेट है, क्या रन है, क्या होगा? चलिए हम चलते हैं ताड़ अंपायर के बाद, या ग्रीन लाइट या रेड लाइट। तो इरफान और ताड़ अंपायर हमारे साथ श्रीशांत यहां पर मौजूद है, काफी नजदीक से देख रहे हैं। मैच मजा है अभी भी। टोटल स्कोर 30 हो चुका है। चलिए चलिए, ग्रीन लाइट आ चुका है। ग्रीन लाइट का मतलब है नॉट आउट। बहुत ही अच्छी कोशिश की थी। 31 अभी चाहिए। इस ओवर की 2 गेंदें बची, तो जीतने के लिए चाहिए अभी भी 4 रन। नाकु रन निना आवश्यकते जो बचे हुए कुछ गेंदें हैं। और ये लाइन गलत। कभी कभी हो जाता है, फ्रेशर में कभी कभी हो जाता है। कोशिश तो किया है एआईडी की टीम ने। अगर यहां पर 10-12 रन और ज्यादा होते तो शायद मैच कुछ बन सकता था। और ये मिसफील्ड। 2 रन की मांग। जी नहीं, 2 रन नहीं मिलेगा। तो चलिए आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। दो रन की जरूरत है 7 गेंदों में। मैच को पूरी तरीके से, जी हां, अशोकनगर पकड़ रही है। थ्रो किया, लेकिन कोई बात नहीं। एंड ऑफ द ओवर नंबर 5 एंड मैच इज टाई। मैच लेवल हो चुका है। तो 6 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। एआईडी के सभी चेहरे निराश। 1 रन की जरूरत है। बचे हुए 6 गेंदे। नेहरू कप में आए, अपना नाम दिया, अपना काम किया, लेकिन आखिरकार अशोकनगर अभी भी टीम पे इस टूर्नामेंट में बरकरार है। तो 1 रन की जरूरत है 6 गेंदों में। 3 विकेट गंवाने के बाद स्कोर बना है 34 रन। 34 फॉर 3 विकेट लॉस। 6 मोर टू गो। जस्ट 1 रन रिक्वायर्ड। मैच इज टाइड। यानी कि नेहरू कप के इस टूर्नामेंट में देख सकते हैं आप, पूरे ब्लू जर्सी, सिर्फ येलो में दोनों अंपायर्स और ब्लू लाइट व्हाइट में बैट्समैन। चलिए चलिए, वाइड वाइड, मैच को जीत लिया अशोकनगर। बहुत ही जबरदस्त यूनाइटेड अशोकनगर ने मैच को जीता। एआईडी के लिए सिर्फ याददाश्त की बात है। तो चलते हैं एक और मैच के लिए। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स पर जाने माने कमेंटेटर्स आए हुए हैं, मेहमान हमारे साथ ही, तो अच्छे क्रिकेटर्स। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच। उसके बाद मोमेंटो के लिए, दूसरी टीम की मोमेंटो के लिए ना
City North Block taking on South Block Congress. So in a meanwhile, we'll be having the tossing ceremony of City Block Congress as well as South Block Congress. I would like to call upon the umpire, the two officials for this exhibition match near the ಹಾಲ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಯೋಧ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ, ನೆಹರು ಕಪ್ 2022ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಿರೋದು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ Ashok Nagara, one of the fantastic, and he is the skipper leading from the front. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್, ತಾವುಗಳು ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಇದೀಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಯ್ಯಾಡಿ एआडी योदास चंद्र सर देखिए आप मिथुन रೈ जी ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಯ್ಯಾಡಿ ಯೋಧ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತಂಡದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವುಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರಲೇಬಾರದು ಅಂತ ನೆಹರು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವುಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಯ್ಯಾಡಿ ಯೋದಾಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ರಾಕೇಶ್ ರವರೇ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಯೋದಾಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯದ ಬಹಳ ರೋಚಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 16 ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೋಚಕತೆ ಇದೆ. ಸೈಯದ್ ರವರೇ, यहाँ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के बीच है.
have elected to bat. So, Congress will be on the field. और नॉर्थ ब्लॉक का कांग्रेस और इसके बाद साउथ ब्लॉक कांग्रेस के बीच जो मैच खेला जाएगा, जो नेट प्रैक्टिस चल रही है वो मितिन रई के साथ, वो है देखिए लेफ्ट बैट्समैन और देखिए वो जो राइट बैट्समैन जो है ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರಸಾದ್ ರವರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೇರವಾದಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ. I request Mr. Kaif, please come here. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ರಾಕೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಬೋಳೂರಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Over to the commentators. So the match will commence 4 overs. So 4 overs, the match will be commenced. The umpires, please note, the match will be of 4 overs. So the batsman for North Block will be left-handed batsman Mr. Mithun Rai at the batting lineup. In the non-strikers end, we have Abhishek. So the bowler will be for South Block will be Nazir. I can see the captain setting up the field for South Block Congress. So the 2 umpires for this match will be Rakesh Devadiga and Mr. Chetan. So the first over for South Block will be commenced from Mr. Kirti Jeppu, and he'll be bowling to the youth icon Mr. Mithun Rai.
So the first delivery of the exhibition match from the bowling mark of Kirti Jeppu, bowling to Mithun Rai. Mithun Rai could not do anything in his delivery. Kirti, second time in this over, bowling to Mithun. Once again, Mithun trying to flex the ball, but completely beaten up from the bowling mark of Kirti. Still no more runs for North Block. Very good bowling from Kirti. Kirti third time in this over, bowling to Mithun. Once again, Mithun trying to go for a mighty shot, but completely beaten up bowling from the bowling mark of Kirti. Still no more runs from the blade of Mithun Rai. Kirti fourth time in this over. Once again, the ball straight to the hands of the fielder Latif Kandak. There was a run out, but completely misjudgment by throwing from Latif. So Kirti, fifth time in this over to Mithun Rai. Was he the ball in the air? Can it go? And it's a wonderful catch. And Mithun Rai back into the pavilion. Ashraf Bengare takes a wonderful catch. Takes a wonderful catch, and Mithun Rai back into the pavilion. So, facing 5 deliveries, unfortunately, he is back into the pavilion. What a mighty catch from a spectacular catch from Ashraf Bengare. The new man replacing Mithun Rai will be Mr. Shamsuddin. Still North Block Congress have not tried to score any run in the bowling mark of Kirti Jeppu. So the captain back into the pavilion without scoring any run for North Block. So Shamsuddin, the new batsman, replacing Mithun Rai. Kirti for the last time in this over. He'll be bowling to the new batsman Shamsuddin. Once again, Shamsuddin flicking the ball to the leg side region. And with that single, North Block have opened their score for the loss of 1 valuable wicket. The score remains on 1 run. So the next it was good batting performance by Mithun Rai. But unfortunately, the fielder, was a good catch, but a fluke catch. And he admitted it. The player admitted it was a fluke catch. And now we have Shamshu. They call him MS Dhoni of Kudrole. Shamshuddin. On the bowling end, it is Nazir Bajal. Shamshu is very confident of pelting. Oh, it was a mess. 5 more balls to go. Nazir Bajal bowling to Shamsuddin and beautifully flicked. And there's a fielder, Meril Rego. Meril Rego misfields, but it gets cost 1 run. Nazir Bajal to bowl the third ball of the innings. We have very senior umpires on the field, Mr. Rakesh and Mr. Chetan. What a shot! And that's running towards the boundary line. But they would not take the risk of taking another 2 runs. Huge crowd there watching this beautiful match. And Shamshu once again trying to flick it towards the weakest player. Meril Rego. Meril Rego throwing the ball to the non-striker's end, and it's the 4th ball of the innings. Nazir Bajal to Abi.
Abi beats it. It's a beautiful shot right out of the ground for 4 runs. And Abi, there's 1 ball remaining from Nazir Bajal, but our young striker Abi is determined to hit the ball out of Ibrahim for a 6. And he's hit it beautifully, and there's a misfielding by Tiruvalguttu Point Chandra Alva. And the total moves up to 9 runs at the end of 2 overs. Another 2 overs remaining. There's a huge discussion between the fielders. They're confused because there's a good batting lineup again to come. We have great batsmen in City Block team. We have Lawrence, a huge master blaster, a middle order batsman. We have Vishwas Das, who is called as the Hardik Pandya of Mangalore City team. We have a hell lot of... We have good players still to come in Mangalore City team, and I think South Block has given the experienced bowler Wilfred. Abi hits it again for a 4. And the score moves to 14? 13. Yeah, the score moves to 13 for the loss of 1 wicket at the main wicket. And that's a no ball. No ball and the ball. And Ravi, oh, it's a no ball. It's a no ball. A free hit. An expensive over by Wilfred. Oh, there's a slight delay in the match. It's a free hit to Abi. Abi strikes it. And that's not out. Very good umpiring by Mr. Chetan. It's an excellent umpiring by Mr. Chetan. Six, come on. The crowd is silent. They're waiting for a 6. The crowd says 6. Abi is going to hit a 6. Will the crowd say 6? Wilfred bowling to Abi. And it's not out. The umpire says it's not out. It's not out. There's tension in the field because there's good batting lineup yet to come. Strong batsmen, huge hitters. And it's again a beautiful shot towards the cover drive for 2 runs for a single. They don't want to take a risk because Shamsuddin is an experienced player. We call him the Ranatunga of City Block. Shamsuddin. Beautifully driven towards the leg side, and it's Ranatunga crosses the line safely. Good batting there. Good cheeky running between the wickets. And he swings the bat, and it's again a misfield there. At the end of 2 overs, the score moves to 19 with the loss of... The end of 2 overs. The end of 3 overs, and I think this should be an interesting over because we have Youth Congress State General Secretary Meril Rego bowling on behalf of Mangalore South Block, and we have Abi on the striker hand who has hit 4-4, 2 4s.
It calls for a wide. The score moves to 20 at the loss of 1 wicket at 3.1 overs. Again a wide. 3 overs and the score moves to 21. They should go out of the ground, but beautifully hit. It should take another 2 runs. Good fielding there by AC Vinaraj. Merrill Rego there. Hits it. And there is out. At the end of 3.2 balls, the score moves to 23 for the loss of 2 wickets. There's beautiful batting there by Abhi. Now we have Nelson there trying to... Oh, there's a white ball again by Merrill Rego. That shows the nervousness of the bowler, while there's an experienced master on the striker's end. And again it's a wide ball. The score moves to 25. It's a decent score. And Nelson there missing it thoroughly. Miscommunication between the players, and Ranatunga for the North Block departs. A huge dismiss for the North Block. Merrill Rego there. Again with the wide. The score moves to 26. And the ball! That's a catch. Hardik Pandya for the team. Vishwas Das going to the non-striker end with full force. It's like a tornado. Vishwas Das to face the last ball of the innings. Can it be an innings what Hardik Pandya played this Champions Trophy? Vishwas Das sinks the ball and the umpire signals the end of the over. We play. Bandar Brigades ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಎಸ್ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪ್ತಾನ ಬನ್ನಿ. It's over. After the completion of 1 over, South Block Congress have tried to score just 1 run. Looking back, it was the North Block 2, the City Block had only scored 1 run. Let's see what miracle can Kirti Jepu do. Vishal on the bowling mark. Another slight fumble from the keeper. Gets a single run comfortable. Once again, Rafiq flicking the ball to the leg side region, straight to the fielder, to Mr. Anil. तो 7 रन आतंड ಕೂಡ 20 ರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಗಲೇ ವಿನ್ ಆಯರೆ. ಕುಡಂಜು ವೈಡ
19 runs ಬೋರ್ಡ್ 12 balls 19 runs ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ನರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಆಚರಿದ ಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಗಾಲಿಡ್ ಪೋನುಂಡು ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ತೇರು 1 run ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ರಫೀಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಫೀಕ್ ಆಕೆ ಬಾಲ್ 4 పోనుండు పోండు 4 పోండు 4 ಫಸ್ಟ್ 4 ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸ್ಕೋರ್ 13 ರನ್ ಆತುಂಡು ಕೂಡ 14 ರನ್ ಬೋಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆಂದರೆ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು పోనుండు ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿ ಬರೋದುಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಪತ್ತೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತೇರು ಕ್ಯಾಚ್ ರಫೀಕ್ ಔಟ್ ಕೂಡಲ 14 ರನ್ ಬೋಡು ವಿನ್ನರ್ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ 9 balls 14 runs required. Itte Praveen anna pondullere Mr. Praveen Chandra Alva. Batting Ite engle na vishu bowling maltondulle yes 4 adda padir ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಯರು 2 ರನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸ್ಕೋರ್ 15 ಆತುಂಡು ಕೂಡ 16 ಬೋರ್ಡು ಎನ್ಮ ಬಾಲ್ಡ್ 16 ಬೋರ್ಡು ಎನ್ಮ ಬಾಲ್ಡ್ 16 ಬೋರ್ಡು ಬಾಲ್ పోనుండు ಕೂಡ 6 ಗೆ పోపుಡ ಅವ್ 4 పోతుండు ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೋರ್ 14 ರನ್ ಆತುಂಡು ಕೂಡ 8 ರನ್ ಬೋರ್ಡು 7 ಬಾಲ್ಡ್ 8 ರನ್ ಬೋರ್ಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ವೈಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ 7 ಬಾಲ್ 7 ರನ್ ಬೋರ್ಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲ್ ಪಿರ ಬೋನುಂಡು ಎಪಿಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ರೌಟ್ಗು ಎಂಪೈರ್ ದಲ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಅಂಚನೆ 1 ರನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಜಿ ರನ್ ಔಡು ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಜಿ ರನ್ ಔಟ್ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಎಂತ ಒಂಜಿ 4 ಹಾಕಿದೇರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 21 ರನ್ ಹಾಕಿಯರು ಬಾಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೊರಡು ಅನಿಲ್ ನಲ್ಪ ದಾಲ ಐಜಿ 1 ರನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕೂಡ 5 ಬಾಲ್ 5 ರನ್ ಬೋಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಂದರೆ 5 ಬಾಲ್ಡ್ 5 ರನ್ ಬೋಡು ಎಪೀಲ್ ಆವನುಂಡು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಔಟ್ ಕೊರಿಯರು LBW ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನಿತ 4 ಬಾಲ್ಡ್ 5 ರನ್ ಔಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲಿಕ್ ದ ಪೊಸತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಅಶ್ರಫ್ ಬೆಂಗರೆ ನಜೀರ್ ಔಟ್ ಆದ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ತೂಕ ಅಶ್ರಫ್ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆಂದಾವೆರ ಇಜ್ಜರ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತೂಕ ಅಕಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೆಂದಾವೆರಂದು ತೂಕ ನಾಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ 5 ರನ್ ಬೋಡು ಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಗಾಲಿಡೆ పోనుండు 1 ರನ್ ಎಂತ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ರಡ್ಡೆಗೆ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪು 2 ರನ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ 3 ರನ್ ಔಡು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ 3 ರನ್ ಔಡು ಇತ್ತೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಬಾಲ್ పోనుండు ಮಾರಿ ಬಂಗಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತಿಯರ್ 2 ಬಾಲ್ಡ್ 2 ರನ್ ಔಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈ ಆಂಡ ಟಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಂಡ ಟಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ 2 ಬಾಲ್ 2 ಔಡು 2 ಬಾಲ್ 2 ಔಡು
ಮೂಲ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ತೂಕ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ದಾದಾಪುಣನ್ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಪೈರ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ ರಡ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ರೀ. ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಪಣಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆತಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಂಡ ಟಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆತಂಡು ಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೋನುಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ನ ತರತಮೆತ್ತ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ ಆತಂಡು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ ಆತಂಡು. ಎಸ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್, North Block as well as South Block. Sheikh Hall. Welcome back. This is the first semi-final. For the first semi-final, Bandar Brigades on the toss and opted for the field, and they invited Rising Stars Urwa to bat first. 6 limited over match between these two. This winner will be in the final and defeater will be the sub-final lot. So under the flood, we are in the right Indian time for 10-5. So myself, Mr. Chandra Paul from Belthangadi. On the commentary desk, we have one more gentleman, Umesh Dandakeri in Kannada, and scorer is Ratish. And Hindi commentator Sayyid Guru Kambala. So live actions through Bedra Media. You are watching live actions from Urwa ground areas in Mangalore. Match been organized by Block Congress Committee North City and Youth Block Congress Committee Mangalore City. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಲೋ ಅವರು. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. Officials for this match, Mohan Yari and Sriram. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಲೋ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. Both the teams are in the customer huddle. On the commentary desk, right from the commentary desk, we have Bandar Brigade. On the left of the commentary box, we have Team Rising Star Urwa. All the congressmen who are participated in the exhibition match. It was a very entertaining one, and finally it was ended. It's a Cree organizer and drone camera is working well throughout the ground, all around the ground. Look at the men who are watching this tournament so far. Everyone's actions are there in the live actions of cricket as well as the spectators. It's captained by the drone camera. There's Bandar Brigades on their way to ground to occupy the position as soon as possible, because it's the first semi-final. Please hurry up. Drone camera down there and capturing the actions of fielders. Bandar Brigades, they are positioning in the right position. For the first over will be in the form of power play. 2 power play over there, and one is mandatory, and second one is batting power play. So we have Roland Sir's son, that's called Ronson. As a scorer, is supporting well in the commentary box.
I request the opening batsmen please get into the ground as soon as possible. It's Ratish Korikal is supporting well in the commentary desk, giving all sort of the statistics of this match. So opening batsmen, where are you please? Yes, finally two open gentlemen from the rising star Urwa coming over here, having the jersey number 5, having the jersey number 46. Six legitimate overs. 36 deliveries limited for them. I think it's going to be a left and right hand combination. We'll start the proceedings from the Bandar Brigades. Bowler will be Ajay. Tilak is on strike and non-striker is Harshit. Here we go. First semi-final. Ajay taking the guard from the umpire, goes in balls. First delivery from coming box and goes in balls. Fast ball driven gently back to the bowler. And his follow through wall fielded. Dot ball. He started with the dot ball. That's a good piece of bowling as far as Bandar Brigade is concerned. This number 33 goes in balls. Outside the off time. Oh! There was a room to play the shot, but there was no connection between the bat and the ball. And dot ball fielded by the keeper. And two consecutive dot balls been bowled by Ajay. Magnificent bowling performance. So again, third time in this over, Ajay goes in balls. Across the umpire, Mohan Ayari. So far, no run been conceded in this over. Balls well, and there is a fielder again. Again, look at the deliveries. Oh, in the semi-final, while we are bowling like this, all the owners as well as the skipper will be very happy, man. They are feeling the pressure there. Good piece of bowling and a gentle push toward the middle area. There is a fielder comes in. Fields it, the throw comes in. Batsman open his account. He's up the mark. Tilak. So far, only 1 run conceded from 4 delivery. I request the electricians, please. David, electricians, Takshanadali. Abhilash comes away from us and bowls to new batsman Dinraj. It's a right-hander. Both the right-handed batsmen over there. Abhilash comes in bowls. That's a good ball. Wow! Finger goes up and this is the wicket number 2. Big blow. Back-to-back wickets. Look at the scorecard. Look at the scorecard. Just 3 runs and 2 valuable wickets. First wicket in the form of Harshit. Now Dinraj without scoring went back into pavilion. So now the new batsman in jersey number 18. A lot of responsibility to carry because there is a Naveen. 2 wickets in a row. Only 3 runs on the board. Abhilash. Left hammer around the wicket to the right-handed batsman. What a good piece of bowling. That's a beauty. That's a beauty. Oh. Appeal, but off-hearted, I think. Yes, umpires are curiously watching. That's a good piece of bowling. Dot ball. Third ball. What a bowling. What a magnificent bowling. It's a brilliant. It's a brilliant in the semi-final. The first semi-final encounter between these two. Once again outside the leg stump and beats it outside the leg stump, but umpire calls it wide. First time wide is record on the board. Score now gradually moves on 4. Abhilash comes in bowls. That's a good piece of play on. Catch the ball. Ball goes to the back of the point. There is a fielder. More than single is impossible and only 1 run conceded.
Score now moves up to 5 for the loss of 2 important wickets. Abhilash, left hammer around the wicket. From Bharat Joda Yatra end comes in balls. Around the wicket comes in balls. Brilliant piece of bowling and equal pride. Oh, there is a fielder. Oh, there's a touch and go. No damage done and quick run between the wickets. So far, very, very good piece of bowling as well as the, look at the commitment, presence of mind of the fielders, how they are supporting well. When bowlers are bowling good line, it's required extra bit of encouragement from the fielder in the fielding side. Plus balls and tries and simply ball goes to the long on area. There is a fielder and single more added to the total. Did this single ends the second over. End of the second over. Score now moves up to 7 for the loss of 2. Now in committee desk we have one more gentleman, Umesh Dandakeri in Canada. ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 15 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಗಳು ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 7, 3.50 ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉರ್ವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 3.50 ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 7. ಕಳಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 15 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವರ್ಗ, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಿನ್ರಾಜ್ ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಿರುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯತ್ತ ವಾಪಸಾತಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಅಡಿ ನೀಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ ಭಾರತ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾದಂಥ ಗೂಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ, ವೈಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಪ್ರಥಮ 1 ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವಿತ ಒಂಟಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಂದರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ, ಗೂಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ್ ರೈಟ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವ್ ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 55,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 33,333 ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ. ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಂದರ್ ತಂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 13 ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು
ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಟ್ಟು 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 13. 4.33 ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ನನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಹರು ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಶಾರುಖ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಿಲಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್. ತಿಲಕ್ ಆರಂಭಿಕವನಾಗಿ ಬಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ಬಳಿಕ ನವೀನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಿನ್ರಾಜ್. ಕಳೆದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ದಿನ್ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಶಾರುಖ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಮೂರದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೇವಲ 14. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4.33 ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಗೆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆ 15. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದಂಥ ದಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಿಖರವಾದಂಥ ಚೆಂಡಿನ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 17, 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರುಖ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18, 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Umesh Dandakeri sir. So, slow progressing here for rising star Urwa. Quite understandable because the bowling department of Bandar Brigades has been outstanding and they really fielded well, bowled well. And now 2 overs which is remaining, and I think rising star Urwa need to bat out of their skin if they wanted to get some good score here. And Ajay brought into attack. Starts with the delivery. It is an unplayable one. Look at the delivery. That was absolutely
Fantastic and unplayable delivery here from Ajay. Just look at the pace in that ball. Absolutely nowhere. Look at that one in replay. How quickly that ball went into the stumps, hit the stumps. The batsman has got no answer to that particular delivery. That is one of the weapon what Ajay always going to loves to pick the wicket. And the wicket number 4 which is back into pavilion. For the next semi-final, Dungarakeri Challengers will going to take on United Ashok Nagar. So that I request all the players, please report here immediately to sign the official chart in our commentary box. So now they're deep in trouble. 18 for the loss of 4 wicket. Ajay, who starts with the first over, is bowled brilliantly. The first over he bowled considered only 2 runs. And then now he came in 5th over. And he already picked 1 wicket here. And definitely it was outstanding bowling performance here from Bandar Brigades. After winning the toss, selected to field first. And bowlers really justifying the decision of the captain. Again, Flum, absolutely Flum. The back-to-back 2 wickets. He's on fire. Ajay is on fire. He picked up 2 wickets. Now I think he's on a hat-trick. So far in this Nehru Cup, no hat-trick has been taken. It's been a golden opportunity for Ajay to pick the first hat-trick and register his name in this Nehru Cup. The first bowler to pick the hat-trick here. The golden opportunity for him. What outstanding 2 deliveries. The perfect delivery to ball to the fresh leg. When the new batsman coming into the middle, I think it's definitely quite enough for the bowler to pick the wicket by bowling that kind of a line and quick delivery. It was a really fastest one. He's putting all we can see that is a strong arm, and he's just putting everything behind that delivery. So all we can see that the pace which is defeating the bat of the batter. Now new batter is walking towards the middle. Now, he's on hat-trick. Ajay, can he able to pick the hat-trick here? Right above the wicket. Oh my goodness, it's not too far from the leg stump. Chance of run out in the non-strikers and they made it. The by call by umpire, not too far from that leg stump, if you believe me or not. Just fractionally that ball missing the leg stump of the batter. And they completed a single for that. 19 for the loss of 5 wicket here in over number 5 in progress. Ajay. Naveen, the experienced campaigner, is there for a long time, but unfortunately he's not getting that much of support from other end. He's batting on 7. Ajay, right arm, full toss delivery, free immediate switch it. Of course, Naveen is not impressed with himself. You know exactly, he just missed the golden opportunity to hit the ball. This is a full toss delivery. Sometimes it's happening. And the batsman 3 minutes switch it already attempted, so that he couldn't manage to take the advantage of that full toss delivery. 20 for the loss of 5 wicket. Ajay bowls. This is going to be a wide. This is the one Ajay sometime when he was trying for the extra pace in the ball, and he couldn't manage to control that line. Ball is going down the leg stump further away. Wide signal by umpire Mohan Iyadi, and with the addition of that single scoreboard moves on to 21 on the board. Once again, this is last and final call for both the teams. Oh, slower one. It's Plum in front of wicket. It's a 3rd wicket here for Ajay. Look at the slowness of the delivery. This has been a really confusing the batsman. He bowled 3-4 quicker delivery. This is very much slower one. Look at that one in replay. Back of the length delivery. And exactly that was a Plum in front of wicket. Batsman played that one right across the line of the delivery. And he just pays the penalty for that. Diamond Ali ಗಮನಿಸಬೇಕು. Dungarakeri Challengers ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ 10 past 30, but excitement, the interest of this cricket is not less here. You can see the crowd gathered here in this UCG cricket ground. Absolutely fantastic to watch. It's a jam-packed stadium out here in UCG cricket ground, and one should say that it's a festival atmosphere here in this most beautiful UCG cricket ground. And so far, it's a domination continues here from Ajay. He's been outstanding in the second spell, and he picked up 3 valuable wickets in just 3 runs. And definitely, it's going to be a match-winning performance here from Ajay. Now, Rohan came into middle, not an easy condition out here, but he need to show his all experience in this situation. That's what we are talking about, the experience. He's a very good sweeper of the ball,
And he swept that one down to short fine leg region for an easy single. And he just retained the strike for the next over. What an excellent over here from Ajay. Just I want to see his bowling spell. He bowled 2 overs and no maiden. Conceded 5 runs and picked up 3 valuable wickets of rising star Urwa. And now not really allow the stars to rise here because of the brigades of Banders. They really done a great job, the bowlers so far. But still, it's the last opportunity of a rising stars Urwa to get some runs here. 22 is the total score. Another 10 runs here in this last over. Definitely it's going to be a comfortable, not a, what we can say, you can fight with that total. And for that is some good batting which is required in this last over. At least 10 takes them into 32. And in this condition, 32, of course, not that much of easy target to chase down if you bowls well, fields well. But so far, I think it's a very good toss to win here for the captain of Bandar Brigades. All the bowlers really justifying the addition of their captain, bowled brilliantly. And they're going exactly just above 5 runs per over, just above 5 runs per over, 5.17 runs per over. Now Rohan will go into face last over. Safwan brought into attack from the far end, from Bharat Chodo Yatra end. All right, arm over the wicket bounced. This time just steering it down. Batsman Rohan, one of his favorite area down at backward point. He picked up a single then. With that single score, moves out to 23 on the board without loss of 23 on the board for the loss of 6 wicket here in over number last and final in progress. Final 5 deliveries remaining. Safwan. Right arm over the wicket, beautifully driven down to deep cover point region. They're running hard, but very difficult to get the second. Here comes a throw from the deep, but already Naveen wanted to retain the strike. He desperately wanted to back on strike, but Rohan quickly realizing the ball is in the hands of the fielder. No question of second run. And unfortunately, the settled batsman Naveen is walking towards the pavilion. 24 for the loss of 7 wicket. So 24 for the loss of 7 wicket. Now new batter just walking towards the middle here. Kiran. Oh, Kiran is a very, very talented the cricketer, the good all-rounder. But just 4 deliveries remaining. Right arm over the wicket. Delivers. Wicket-keeper fails. Fumbles. Chance of run out in non-strikers. And Rohan not quick enough to save his wicket. Wide call by umpire. This is a one bonus run, but they couldn't manage to get another bonus run in the form of run. But it's a little bit late here for Rohan to complete that single. So Rohan back into pavilion. Of course, they need to take each and every chances for the run. And this time, little bit fumble wicketkeeper behind the stump, but he recovered very quickly. Then picks the ball, returns the ball into the hands of the bowler. And Safwan has got a little bit intelligent walk. Just a back and throw comes into play to hit the stumps. That time, Rohan is out of a crease. So 25 for the loss of 8 wicket. Quite unusual scoreboard. You can see the wickets are tumbling. Runs are very hard to combine against the disciplined bowling performance and fielding performance of Bandar Brigade. They are really looking in a top. Kiran, left-hand bowler, right-hand batsman. Kiran will go into face. Last 3 deliveries remaining. Safwan, 4 deliveries remaining. This time ball is in there, but out of the reach of Abhilash, who will stand at backward point region. Once it looks like ball is going to carry to the fielder. But fortunately for Kiran, that ball is just landed in front of backward point fielder Abhilash, and he picked up a single for that. 26 for the loss of 8 wicket. And last 3 deliveries remaining in the innings of rising stars Urwa. This time again Safwan, delicately played there by the batter, just waiting for the turn of the delivery and steering it down to backward point region for an easy single. And with their single score, moves on to 27 for the loss of 8 wicket. Now both the batsmen quickly realizing that they not to waste a single delivery here. They now convert that each and every deliveries into a scoring one. And Kiran again facing Safwan. Went for the reverse sweep, not really getting that one from middle of the bat, but there is no hesitation for the second run. And once again, one more wicket is back into pavilion. Wicket number 9 of Rising Stars Urwa is back into pavilion.
Kiran desperately wanted to retain the strike. That's why he's calling his partner. This is the last over in progress. So they have to take every chances to score the runs. Not really having enough runs on the board. 27 for the loss of 9 wickets. The last over is in progress. 28 lead Prakashan. 28. Royson, please, Rolson, please note. 28 for the loss of 9. Thank you. So last delivery of the innings of Rising Stars Urwa. Kiran will go into pace. 28 on the board. Can they able to get a 30? Absolutely, they will go to get the 30. They're going for the run. Chance of run out. Oh my goodness, it's a disaster. This is the wide and all out. They bundle out. One delivery is to spare. You can imagine the 6-over formative game. The single delivery definitely going to make a big difference here. And before completing their 6 overs quota, they bundled out for just a 29 runs and they set a target of exactly 30 to win the match and the required run rate of exactly 5 runs per over for Bandar Brigade. Looks like the Bandar Brigade, they won the first step after winning the toss, selected to bowl pass. They bowled brilliantly, fielded brilliantly, and they're restricting the opposition for just 29 runs. And they set a target of exactly 30 to win the match. And wait and see how well Rising Star will going to defend this total. And wait and see how well Bandar Brigade's batsmen will going to get this moderate total of 30 to win the match. And before the innings will go into commence of Bandar Brigade, time to change in commentary box as well. Once again, I would like to invite my friend and of course senior most Hindi commentator Sayyid Guru Kamla for the further explanation of the match in our national language, Hindi. Thank you. शुक्रिया सतीश सर। ये पहला रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट का कि ऑल आउट होने वाली टीम इस वक्त बनाया जा चुका है कि किस तरीके से ऑल आउट हुई है। इस टूर्नामेंट का पहला रिकॉर्ड। तो सुबह से हम लोग मैच देख रहे हैं, कौन सी टीम कितना बना रही है, कितना रन दे रही है, कैसे रन को चेस कर रही है। लेकिन तो इस वक्त जो रनों को चेजिंग करने के लिए तैयारी में दोनों टीमें, हालांकि जो जीतेगा वो इस टूर्नामेंट में फाइनल पे एंट्री होगा, जो हारेगा और इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। जितने मेहनत किया है उस मेहनत का फल पाने के लिए दोनों टीमें यहां पर लड़ रही है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर थोड़ा जरूर कम है, लेकिन मैच पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे बंदर ब्रिगेड। हालांकि जिस तरीके से बंदर ब्रिगेड ने टॉस को जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया, राइजिंग स्टार अपने होम ग्राउंड में पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, जो कि टॉस जीतने के बाद ब्रिगेड ने, और उसके आगे की टीम जो उर्वा, राइजिंग स्टार उर्वा ने बल्लेबाजी पर टोटल रन बनाया अपने 10 विकेट गंवाने के बाद। तो टारगेट दिया 30। दोनों टीमें तैयार है यहाँ पर। यूनाइटेड अशोकनगर टॉस के लिए, उसके बाद क्या टॉस के बॉस कौन बनते हैं देखना होगा। तकरीबन यहाँ पर वक्त बढ़ता जा रहा है। 9:40 के करीब
10:40 के करीब, तो अभी भी कुछ घंटों का मैच है, माफ कीजिएगा। चलिए, मैच के बाद ग्रीन कार्ड झुका चुके हैं। डोंगरखेड़ी टॉस ने जीत लिया है अपना पहला टॉस, सेमीफाइनल का दूसरा मैच डोंगरखेड़ी और उसके साथ ही साथ एक और जबरदस्त दिग्गज मैच यूनाइटेड अशोकनगर। श्रीशांत की टीम त्रिशांत की टीम क्या कर सकती है फाइनल में प्रवेश करने के लिए? अब इस वक्त चाहिए जीत के लिए 30 रन, 36 गेंदें शुरुआत की। अंपायर के नजदीक से पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार। वाइड राइजिंग स्टार उर्वा के तरफ से पहले ही ऑलरेडी स्कोर कम है, तो वो उस स्कोर को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी करना होगा। जैसा कि शायद राइजिंग स्टार को ऑल आउट किया था, उसी तरीके से ऑल आउट करना होगा ब्रिगेड बंदर ब्रिगेड के लिए। ओ बेहतर गेंद, चलिए चलिए भैया, पहला विकेट जी ले लिए। वाइड भले ही जा चुका है, लेकिन विकेट मिल चुका है। राइजिंग स्टार के प्रेसिडेंट हमारे साथ टीसी गणेश उर्वा, जिनका नाम बहुत ऊंचा है, और क्या पहली विकेट आउट होने के बाद आगे की टीम की तो चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो आ चुकी है। जी हां, अभी भी कई मैचेस, कई विकेट्स, कई रन, कई बॉलर्स आना बाकी है, लेकिन इस वक्त पहला रन, पहला विकेट, पहला ओवर। तो पहला ओवर गेंदबाजी पर किरण, जिन्होंने पहला वाइड दिया, उसके बाद विकेट लिया, उसके बाद टीम ऑर्गेनाइजिंग किया, और उसके बाद रक्षित, जिन्होंने इस वक्त उर्वा के इस मैदान पर, रक्षित सालियन, देख सकते हैं आप, सुबह से आप इस टीम को बनाया, इस टीम को सजाया और इस टीम को हौसला बढ़ाया, लेकिन अगर ये मैच जीतेगा तो शायद आप फाइनल पे एंट्री, अगर कुछ ना कुछ बैड लक से आप हार गए तो घर गए। तो चलिए मैच को चलते हैं देखने के लिए। अभी भी दर्शक बड़े आराम से अपनी नींद को छोड़कर अपनी जीत के दहलीज को छूने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए दर्शक कहां बैठे हुए हैं, देखिए अपने कीमती नींद को छोड़कर अपने काम को, कल सबको ड्यूटी रहती है मंडे, यानी कि संडे हॉलीडे, लेकिन मंडे ड्यूटी रहती है, फिर भी उस काम को छोड़कर मैच को देख रहे हैं। इस बार बेहतर गेंद, जरूरी था यहां पर इस गेंद को स्ट्रोक बनाना। मिड ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, फाइन पे कोई खिलाड़ी आगे है, उसके बाद में पॉइंट के खिलाड़ी थोड़ा पीछे है, फाइन लेग के खिलाड़ी थोड़ा सा और भी आपके पीछे नजर आएंगे, विकेट कीपर के नजदीक देखेंगे। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, टारगेट। चलिए गेंद को लेकर तैयार है टारगेट। 30 टारगेट इज ऑलरेडी स्कोर। एक विकेट गिर चुका है, दो रन पहला ओवर किरण, score moves on to 3. एक और गेंद डॉटेड डिलीवरी, तो किरण ने अपनी गेंदबाजी में सही निभा रहे हैं गेंदबाजी। इस ओवर की आखिरी एक गेंद बची है, तो end of the over and score Muzam to totally for first over close, 4 run and 1 wicket loss। एक विकेट के नुकसान पर 4 रन बने हैं, तो एक ओवर समाप्त, एक विकेट जा चुका है।
Second over, first delivery is just misfield and chance of the run out and a single. 5 runs the board. तो यहाँ पर 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि हर्षित अपना पहला ओवर इस इनिंग का दूसरा ओवर 30 रन का लक्ष्य है, तो अभी भी 25 रन की जरूरत है। अभी भी आने वाले कुछ गेंदें बची, इसके बाद 4 ओवर टोटल 6 ओवर का मैच। तो नेहरू कप 2022 में एक और अच्छा स्ट्रोक, सिंगल रन, जो डबल दौड़ने की पूरी कोशिश, जरूर कामयाबी मिली है 2 रन लेने की। हर्षित टोटल 7, अभिलाष बल्लेबाजी पे, अभिलाष 9 रन पर, स्ट्राइकर रन पर अजय। सिंगल डबल चुरा रहे हैं अजय और अभिलाष, अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों, अच्छी अपनी टीम के लिए काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज भी वही काम करते हुए अपनी टीम के लिए। बंदर ब्रिगेड जो पिछला मैच था यहाँ पर एग्जीबिशन मैच, जो कि साउथ ब्लॉक जिस तरीके से बता रहे थे, उसके बाद में जो टीमें खेल रही है आज के दिन नेहरू कप 2022 में, तो टोटल स्कोर 8, सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। तो अभी कुछ रन चाहिए जीतने के लिए, तो देखना होगा क्या अपनी रन संख्या को आगे बनाने के लिए। दोनों बल्लेबाज काफी सेट हो चुके हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए क्या ग्लांस करने की कोशिश, एक बार फिर से अभिलाष, और डायरेक्ट हिट होने का चांस है, ओवर थ्रो किया, पीछे फील्डर है, कोई रन नहीं मिल पाएगा, सिर्फ 1 रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर बन चुका है 9। इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं टोटल। पहले ओवर फेंकने वाले किरण, दूसरी ओवर हर्षित। तो पहले आउट होने वाले खिलाड़ी शाहरुख आउट होने के बाद एक और अच्छा शॉट, फील्डर पीछे है, रन आउट का पूरा चांस, अगर डायरेक्ट हिट होता तो क्या ये आउट है। बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छी काबिलियत यहाँ पर फील्डिंग पर, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। देखिए किस तरीके से रिप्ले आया, वहां सीधा विकेट पर लेकर गेंद को लगाई, तो यहाँ पर ये दूसरा विकेट का नुकसान हो चुका है। आउट होने वाले खिलाड़ी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अभिलाष, सोचने की बात इस वक्त बल्लेबाज अजय। अभी भी 1 गेंद बचा है इस ओवर की। Last 1 ball to second over. Total score Musam 2, 9 on the board for loss of 2 wickets gone. 30 targets already. End of the last 2 wickets. यानी कि 2 विकेट के खोने के बाद एक और गेंद बची है हर्षित की। इस बार भी ग्लांस करने की कोशिश, अच्छा तरीका अपनाते हुए चलिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन अभी भी बचे हुए। टोटल 24 गेंदें हैं, जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 20 रन। और पहले ओवर में 1 विकेट जाने के बाद 4 रन और दूसरी विकेट में 10 रन, तो 10 रन बने 6, और इसके बाद इस ओवर में टोटल रन बने हैं 2 ओवर के बाद 12 गेंदों में 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी थर्ड ओवर
लेकर तैयार है दिलराज दिनराज। अभी भी 22-24 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए 20 रन। 30 टारगेट्स ऑलरेडी। स्कोर मोज अप टू 10। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी बड़े आराम से जीत सकते हैं, लेकिन 20 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदें हैं, 4 ओवर अभी भी बाकी। और थ्रो किया, चांस चांस, बच गए वहां पर अभिलाष। और थोड़ा तेज थ्रो आती, डायरेक्ट हिट होता तो शायद चांस था विकेट लेने का। बंदर ब्रिगेड के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं बंदर के खिलाड़ियां। स्कोर अभी भी 10 रन रुक चुका है, स्कोर पूरी तरीके से रुक चुका है। एक और अच्छी गेंद यहां पर, डॉटेड डिलीवरी। बल्लेबाज प्रेशर में आ रहे हैं। दिनराज 2 गेंदें लगातार डॉट किया है। लगातार 2 गेंदें डॉट से दिनराज। आखिरकार 1 रन ले ही लिया 3 गेंदों पर दिलराज के। अभिलाष एक भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक। अभिलाष कई सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी भी वही तजुर्बा है इनके पास। तो टोटल 3 गेंदों में 1 रन जरूर दिया है यहां पर दिलराज ने। Score moves up to 12 and Dinraj last 2 ball, 3rd over। तो अभी भी कुछ रन चाहिए जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस बार। शायद फुल टॉस, लेग बाई का इशारा, पैड पर गेंद लगी है अभिलाष की। क्या थ्रो था, क्या जबरदस्त फॉलो थ्रो था। और गेंद अभिलाष के करीब से गुजरी है। तो यहां से 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो टीम का स्कोर इस ओवर में सिर्फ 2 रन, माफ कीजिएगा, इस ओवर में 3 रन। टोटल स्कोर 13। अभी बचे हुए 3 ओवर बाकी है। 3 ओवर में कुछ रन चाहिए जीतने के लिए। क्या कर सकते हैं देखना होगा टीम के लिए।
गेंदबाजी में मंजीत, चौथा ओवर की पहली गेंद मंजीत। एटीन बॉल 17 रन रिक्वायर्ड, 18 बॉल 17। पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं यहाँ पर। अभी भी रन चाहिए जीतने के लिए। 17 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। 16 रन रिक्वायर्ड, 17 बॉल। मंजीत इस बार मौके का चौका नहीं मिल पाया, लेकिन पूरी तरीके से मंजीत की गेंदें बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर अभिलाष अपना काम करते हुए। मंजीत 2 रन पूरी तरीके से 2 गेंदे में हो चुके हैं। टोटल स्कोर 15। चांस है वहां पर, वाइड एक्स्ट्रा रन, स्कोर 16 on the board. Already 2 wickets gone. Ajay Shahrukh 2 wicket loss and total score moves up to 16 and 2 balls and 1 extra run, यानी कि 1 एक्स्ट्रा रन वहां पर मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कोर है वो काफी नजर आ रहा है कि देखना है कि किस तरीके से आएगा। दोनों भी बेहतर गेंद है वहां पर, हर गेंद पर रन चुराने की कोशिश करते हैं अभिलाष। पहले से ही वो क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, क्रिकेट खेलने के लिए बहुत तरसते हैं। कई दूर दूर जाकर उन्होंने खेला है बहुत टीमों में, लेकिन ज्यादातर आज बंदर ब्रिगेड क्लिक करने की कोशिश। दूसरे की मांग, जी नहीं, दूसरा रन नहीं मिलेगा। तो चलिए, 2 गेंदे इस ओवर की अभी भी बाकी है। टोटल स्कोर वहां पर पहुंचेगा 18। 2 गेंदों में कितने रन बनाते हैं देखना होगा। अभी भी चाहिए जीतने के लिए तकरीबन, जी हाँ, 14 गेंदों में 12 रन की जरूरत है जीतने के लिए। अंग्रेजी कमेंटेटर चंद्रप्पा और सतीश सालियन, जो कि सुबह से तो नहीं थे, लेकिन कुछ साथ हमारा हाथ बटाने के लिए सतीश सालियन सर, उसके बाद में हमारे साथी। तो देखना होगा, अभी भी कुछ गेंदें बाकी हैं। इस ओवर की 1 गेंद बची हुई है। मंजीत, वो जो ओवर जो कर रहे हैं मंजीत, एक्स्ट्रा जरूर दिया है लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं दिया है, क्योंकि 2-2 रन नहीं चुराने का मौका दिए हैं अभिलाष अभी तक और उनके साथी के साथ जुनेद पारी को संभाला। ये अच्छा चालाकी बताई, पिच के अंदर गेंद को ढकेल कर स्लिप छोटा सा शॉट खेलकर दौड़ रहे हैं। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर के बाद टोटल टीम का स्कोर बन चुका है 20। अभी भी 12 गेंदों में 10 रन की जरूरत है। क्या मैच होगा, और कहना तो उतना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिगेड, बंदर ब्रिगेड अच्छी टीम है। अगर इस मोमेंट में शायद अभिलाष का विकेट लेना जरूरी है। अगर अभिलाष और एक ओवर तक रहेंगे तो मैच को बड़े आसानी के साथ जीत पाएंगे। अभिलाष एक अच्छे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं राइजिंग स्टार उर्वा के लिए किसी भी कीमत पर 2 विकेट लेना जरूरी है। ये 2 बल्लेबाज बहुत डेंजर है, और एक है अभिलाष और एक जुनेद। जुनेद भी अच्छा खेल रहे हैं, सिंगल डबल रोटेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और इनको जरूरत नहीं है बड़े शॉट खेलने की। अगर आपको 12 गेंदों में तो जीतने के लिए 10 रन चाहिए, तो कम से कम आपको 1-2 रन डबल लेंगे। पावर प्ले, जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले।
तो उस हिसाब से दिया जा रहा है। श्रीराज मेन अंपायर है और माफ कीजिएगा मोहन एआरडी मेन अंपायर है। तो स्क्वायर लेग अंपायरिंग पर श्रीराज रुके हुए हैं। इस मैदान को हर चप्पा चप्पा छानते हैं दोनों अंपायर्स। एआरडी काफी नजदीक है मोहन और उनके साथ ही साथ श्रीराज और रोनैन पिंटो कमेंट्री बॉक्स पर हम, और उसी के साथ चंद्रप्पा सर पेलतंगड़ी इन्होंने भी किया और कहीं ना कहीं कभी साथ दिया है। काफी लोगों ने हमारा साथ दिया है जिस तरीके से आज के क्रिकेट टूर्नामेंट में नेहरू कप 2012 में। तो चलिए बचे हुए 12 गेंदे हैं तो 12 गेंदों में चाहिए 10 रन। क्या वो 10 रन रुका पाएंगे, रोक पाएंगे? राइजिंग स्टार उर्वा अपने होम ग्राउंड में अपने आगे की टीम के लिए, अपने बल्लेबाज जुनैद और अभिलाष के लिए 12 गेंदे हैं। क्या होगा कहानी, देखना होगा। कहानी में ट्विस्ट आएगा। थोड़ा सा मैच को जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि वक्त नहीं है, सब कुछ है लेकिन यहाँ पर वक्त बहुत कम है। अभी भी 2 मैचेस होना बाकी। जिस तरीके से एक मैच पूरी तरीके से है, इसके बाद एक मैच है, टोटल 2 मैच पेंडिंग है, एक लास्ट सेमीफाइनल और फाइनल। क्या इस टीम में जो भी जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल प्रवेश करेगा? क्योंकि एक ही मैच है तो कोशिश करेंगे। सभी ने नजदीक घेरा बनाया है, काफी नजदीक रुके हैं विकेट के। स्वीप किया है, क्या चालाकी बताई। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। वाओ, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लगा कुछ बल के लिए, ऐसे दौड़े हैं तो शायद ये रन चुराना ही होगा किसी भी कीमत पर। ग्यारह गेंदों में जिस तरीके से बचे हुए 8 रन जोड़ने होंगे तो क्या ये तिलक गेंदबाजी पर तिलक राइजिंग स्टार उर्वा के टीम के तरफ से तो इकबाल गोरी के इकबाल अभी पधार चुके हैं, शायद अपनी गहरी नींद को छोड़कर। इस मैदान पे क्या बात हो गई इनकी। तो ये बहुत अच्छे स्टार क्रिकेटर्स है, पुराने खिलाड़ी ये कहते हैं हमारे कन्नड़ा भाषा में हले हुली। लेकिन इस बार भी बेहतर गेंद, लेकिन 1 रन से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 1-1 रन लेंगे तो मैच खत्म हो जाएगा और बंदर ब्रिगेड फाइनल आएगी और राइजिंग स्टार थोड़ी अपनी नींद को चौंका देगी। हालांकि आखिरी मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल में, जो हारेगा शायद इस मैदान की पहचान और इस मैदान की याददाश्त लेकर अपने घर जाएगा। तो खतरनाक टीमें हैं, खतरनाक बल्लेबाजी है। ये क्या खिलाड़ी है, ये क्या खिलाड़ी है। हंस रहे हैं अभिलाष, हंस रहे हैं कि शायद भैया मुझे आउट करने के लिए उतने आसान गेंदबाज नहीं है। बहुत पुराने खिलाड़ी है, ये पुराना चावल है, जिसका भी गिरे तो बारी काफी अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन इस बार अभिलाष अपनी टीम को आगे और लेके जा रहे हैं। राइजिंग स्टार के लिए विकेट की जरूरत है। तिलक गेंदबाजी पे, और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। जरूरी है डॉट के लिए, जरूरी है डॉट होना भी जरूरी है। इसके बाद 1 ओवर बाकी है, 6 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। ये क्या हुआ, 1 रन और मिल गया। जी हाँ, चलिए 5 रन पीछे है, 5 रन दूर। बचे हुए 7 गेंदे हैं। ये गेंद डॉट करना होगा, किसी भी कीमत पर ये गेंद डॉट करना होगा। लास्ट बॉल 5th ओवर का, आखिरी गेंद 5वीं ओवर की, किसी भी कीमत पर यह डॉट होना होगा क्योंकि नहीं तो मैच मुश्किल है। वाह, क्या बेहतर गेंद, बेहतर गेंद, लेकिन किस्मत खराब है। लेग बाइस। चलिए 6 गेंदें 4 रन। क्या होगा मैच में, कहानी में ट्विस्ट आएगा। नेहरू कप के लिए बहुत मुश्किल झेलना पड़ रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड को कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने मैच को जीता और बड़े आराम से अपनी अपनी फैमिली के साथ आराम कर रहे हैं। तो अब चलिए, आज का मैच बहुत ही क्रूशियल होगा। जो जीतेगा वही सिकंदर इस मैदान की जो टॉप
स्कोरर है, टॉप मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज किसके हाथों में जाएगी? ये नेहरू कप किसके हाथ में आएगा? और इस कप को देखकर पता चलता है कि कितनी टीमें, आज 16 टीमें भाग ली है, एक टीम बाई। और तो और इस कप के फाइनल की इंतजार सबको है। और देखना होगा, जो भी यहाँ पर हमारे मीडिया देख रहा हो, बेदरा मीडिया देख रहा हो, अपने स्मार्टफोन ओपन कीजिए, फाइनल मैच आ रहा है आपके इंतजार में। कहीं मैचेस आप मिस ना करें, क्योंकि आपके नेट बैलेंस को और भी रिचार्ज कर लीजिए। फाइनल मैच नेहरू कप किसके घर जाएगा, और इसका इंतजार रहेगा एक मैच के बाद। एक और अच्छी गेंद, और एक और अच्छी गेंद। क्या होगा ये मैच? 4 रन की जरूरत है 5 गेंदों में। मजा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है, और मैच को देखने के लिए भी वो चांस बन रहा है। तो चलिए, ये शॉट अच्छा है, फील्डर पीछे, फील्डर पीछे, पॉइंट के फील्डर को रोकना मुश्किल। 1 रन बड़े आराम से। क्या मैच है ये? 4 गेंदों में चाहिए 3 रन, 4 गेंदों में 3 रन। 1 डॉट की जरूरत है, 2 डॉट की जरूरत है। क्या मैच टाई होगा? अभी तक कोई मैच टाई नहीं है। तो जिस तरीके से अगर आज सुबह से हमने मैच देखा है, एक ऑल आउट टीम वो है राइजिंग स्टार उर्वा, लेकिन वो अगर यहां पर जीतेगी तो शायद जीत का डंका बजेगा। तो देखना होगा फील्ड की जिस तरीके से अगले मैच की तैयारी है यहां पर यूनाइटेड अशोक नगरा, साथ ही साथ एक और टीम इंतजार कर रही है सेकेंड सेमीफाइनल का। तो चलिए, 4 गेंदों में 3 रन की जरूरत है। और इस बार वाइड, इस बार वाइड। थोड़ा सा सर के ऊपर प्रेशर, शायद मैच में छक्का लगता है तो बल्लेबाज खुश, वाइड होता है तो गेंदबाज निराश। और ये तो क्रिकेट में चलता ही है। मैच को जिताना था, लेकिन क्या करें, किस्मत किस तरफ पलट रही है। जी हां, कभी कभी वाइड से भी मैच चला जाता है, कभी कभी विकेट लेने से मैच करीब आता है। अभी भी कुछ हुआ नहीं, विकेट लेने की जरूरत है। बढ़िया शॉट, चलिए चलिए, अपना पैक कर लीजिए राइजिंग स्टार, अपना पैक कर लीजिए। मैच आपने हार लिया है। बहुत बहुत दोनों टीमों के लिए शुक्रिया, दोनों टीमों के लिए हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम। और तो और बंदर ब्रिगेड अपना फाइनल में प्रवेश कर लिया है, अपना सीट बना लिया, अपना टिकट ले लिया फाइनल के लिए। राइजिंग स्टार उर्वा के कप्तान से विनती है वो अपना मोमेंटो ले, जो माइन स्टेज वहां पर लगा है। तो मैन ऑफ द मैच की खोज किया जा रहा है। सतीश सालियन और रितेश अजय, जी हाँ, अजय को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। तो सेकेंड सेमीफाइनल शुरू होने से पहले आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी तो उसी प्रकार की आज की ताजा खबर यह है कि गोरियंग बॉयज के इकबाल के पुत्र इस वक्त मैच को देख रहे हैं बड़े आराम से, अच्छे तरीके से लाइव टेलीकास्ट में है, यानी कि चेतन कुमार, उसके बाद लियाकत शेख। तो आप माइन स्टेज के पास, आप माइन जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, सभी के चेहरे नजर आते हुए, जयराज कोटियन, उसके बाद नेल्सन, उसके बाद नवाज, उसके बाद कई लोग जुड़े हुए हैं। तो देखना होगा, जी हाँ, बहुत ही खुशी का माहौल है। यूनाइटेड अशोकनगर, उसके बाद में अब होने वाली टीम डोंगिरकेरी। थोड़ा मैच को जल्दी करना होगा।
तो चलिए कमेंट्री बॉक्स पर हमारे साथ सतीश सालियन सर आगे का हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पे अपने खूबसूरत आवाज में बहुत ही खतरनाक कमेंटेटर है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड सेमीफाइनल के लिए। So, hello, mic check. Mic testing 1, 2, 3, check. Thank you very much. So thank you very much, Sayyid Guru Kamla. We are into the last and final semi-final. It's the last and final match, semi-final of this prestigious Nehru Cup 2022. And two teams already set now for the big moment. And knockout, and after coming to this semi-final, both the teams doesn't want to go home
with the empty hand, and that's why the level of competition definitely is going to be very high. After winning the toss, captain of Dongarakeri Challengers elected to field first, so that Mahesh with the jersey number 10 will going to start the proceedings, and two opening batters for United Ashok Nagar. It's the same opening pair, Prasanna as well as Trishant, the experienced batsman out here in the middle. And here is Prasanna will go into first delivery. Short fine leg, short square leg. There is a short mid wicket. Deep long on, short mid off, short cover point, just a short backward point, and a short third man, and one fielder at deep extra cover. Here is a pass ball. Mahesh, Avi Pramas, right arm over the wicket, ball, slower one, starts with a beautiful delivery. It's always going to be tested, always testing the temperament of the batter, bowling that kind of a slower one, and the batsman going for the drive, played it one little bit early, ball just missed that, missed the bat off of the batter, then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run. And drawn camera of Bedra Media is flying around here. Of course, looks like it is covering our commentary box. Along with me, we have a senior most commentator, Chandapa sir. And here is again one more single. The first run comes up here for United Ashok Nagar. They are off the mark with the single. One without loss of any wicket here in over number first in progress. What an outstanding cricket tournament is progressing here. Nehru Cup 2022. And we are into the semi-final, the last semi-final of this tournament. And still it's late night, almost time is inching towards 11:30, but still we can see that some good crowds out here in enjoying the game of cricket. Not only here, but some good viewers watching this tournament with the live telecast of Bedra Media YouTube channel. So one more single is added total with the addition of that single scoreboard Namuzan to 2 on the board. And 2 without loss of one wicket here in over number first in progress. Mahesh with a short run up. A right arm over the wicket. Balls a wide delivery far outside the of off time. Mahesh just trying for the experiment. Not looks like he's 100% fifth. Maybe that was a hamstring injury. Little bit troubling him to get his line and length proper. And one more addition. Scoreboard Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. Mahesh again, right arm over the wicket. Oh, that was a very good delivery in the top edge and straightforward catch here for Mahesh. This is one of a weapon of Mahesh. Sometime bowling a very slow leg cutter. The batsman have to wait for the ball. Just look at the dismissal. He just couldn't manage to play the ball properly because ball is not really coming to his bat. He tried to walk that on the onside edge and got a leading edge. Then Mahesh picked up a wicket here. I think it's a very good strategy because in this condition, if you bowl quickly, then ball is easily coming to the bat. And when you bowl the slower one, especially when you're bowling along a carpet, I think it's the best thing to do for the bowler like Mahesh when you're having a leg cutter, the slight leg cutter in the negation, and he got the reward for that. The first wicket is back into pavilion of United Ashok Nagar. The new batter, one more very talented cricketer, Tilak, now came into middle with the orange cap. And wait and see how he will going to build the innings along with the Trishant, who has been outstanding throughout the tournament with the bat, with the ball, and even with the field as well. So Mahesh once again back to his bowling mark. Successful bowler. 5th time in this over to Tilak. There's a nice looking drive, left off a short mid off fielder, and before that short mid off fielder to field that one, ample time for the batter to complete the single. So with that single scoreboard Namuzan to 4 on the board here in over number first in progress. Trishant back on strike. Short fire leg is there, short square leg is there for him. Ah, beautiful. Oh, wicketkeeper behind the stump. It's a bad miss. Ball running down to deep third man boundary. That will going to be cut it off. And before that, the throw coming for the fielder. And they course off for 3 valuable runs. A by call by umpire. It's definitely going to be the wicketkeeper behind the stump. Rajesh is a former cricketer of Hanuman cricketers. But sometime when a batter looking for the reverse stroke, it's very difficult for wicketkeeper to see the line of the ball.
They missed it complete. Then 3 valuable runs here for and scoreboard. 3 valuable runs and scoreboard is 7 on the board. 7 for without loss of any wicket after completion of over number first. That was a really 3 valuable runs. Otherwise, Mahesh bowled brilliantly. We have some good players from Hanuman cricketers. Lokesh, who is leading from the front in this throughout the tournament, he batted brilliantly. And Mahesh, who really takes the match away from the opposition in the quarter final, and he becomes a man of the match for that good innings, short and sweet innings, as Manish is brought into attack. One more very young, talented bowler. So far, he's been outstanding throughout the tournament with his bowling. Now he's bowling from the far end. Right arm over the wicket, he delivers. A lovely sweep shot there from Trishant down to deep backward square leg region. They're running hard, looking for the second. Maybe they're looking for any pumble from the fielder. They will going to grab the opportunity for to come back for the second. But they now settle for the single because they're a neat collection from the fielder in the deep. And scoreboard is 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Manish back to his bowling mark. Short run up. There is a 2 power play, 1 mandatory power play, and another one is a batting power play, where a batting team can take the batting power play anytime. Again, 1 more single is added. Total nice looking drive there from Tilak. He's just building the innings. Just he knows exactly the kind of the batting required under this condition after losing first wicket very quickly. And again, Manish from the far end. Right arm over the wicket. Just time reverse. It comes into play. Will he do it to defeat the fielder? No. Good piece of fielding there by Prashant. Really good fielding. Take a look at an acknowledgement coming from the crowds, because he knows that if he's bending down, ball will go into pass under his hand. So he's putting his right leg into the direction of the ball. Look at that one. Stopping certain boundary for his team. Double figure coming up here for United Ashok Nagar. Looking for the improvisation. Appeal for leg before wicket here. And just the bat is involved, and that's why umpire not interested. And Tilak picked up a single for that. With that single, scoreboard now moves on to 11 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. 11 on the board. Again, that ball really good, really clever bowling from a young bowler. By call by umpire. Wicket keeper rings again, missed that opportunity. Rajesh outside the line of leg stump. Good change of line there from Manish, seeing that the batter is going for the reverse sweep. Then he's deliberately bowled outside the line of leg stump. Manish again from the far end. Driven uppishly but quite safely down to deep extra cover region. There is a protection for that stroke, and it's a good over on the point of view of United Ashok Nagar. They really rotates a strike in that over. It's completion of over number 2. It's a 13 for the loss of 1 wicket. Now 4 overs remaining in their innings, and wait and see how many runs they will go into score in the 3 overs. So discussion is going on. So both the teams really played a good game of cricket. Both the teams have played a good game of cricket here. It's not so easy to come into the semi-final of this prestigious Nehru Cup 2022. But all we can see that both the teams really played a good game of cricket. And now they are in the semi-final. They doesn't want to lose here. After that, a lot of hard work to coming into the semi-final. Now Prashant brought into attack. One more very talented cricketer for Dungarakeri. Young cricketer of Hanuman cricketers. The 3rd over is going to start from the commentary box, and Tilak is on strike. Short fine leg, deep backward square leg, deep mid wicket. There's a mid on, short mid wicket, deep long on is there. The deep extra cover and a deep backward point. The 5 fielders outside the circle. Prashant just asking that square leg fielder coming a little bit squarer. Maybe the infant of the square. No, just a bit. Yes, it is the infant of square. Top edge, leading edge, but the ball will go into land it safely before Mahesh run across his left.
And both the batters completed a single. Mahesh really having a problem of hamstring injury and couldn't manage to run quickly. The 14 for the loss of 1 wicket. Prashant back to his bowling mark. Trishant just examining the field set. There is a deep back point for the reverse stroke. He's a master of playing that reverse stroke. Then for sweep shot, there is a square leg, fine leg inside the ring. Trishant facing Prashant with a short run up. Right, Amodik beautifully bowled right across the line of the delivery. Trishant played quite dangerously because if he missed the ball, the previous match also he's become a leg before wicket when he tried to play across the line. This time I think he's got a bat onto that. Otherwise, it's a little bit shuffled across the line to maybe the intention of Trishant to hit the ball down to deep mid wicket and square leg. He's just aiming towards that gap. 15 for the loss of 1 wicket. Prashant again. Right arm over the wicket delivers. This time a quicker delivery is trying for, but this time a wide call by umpire and rightly so. Maybe Tilak one stage he was looking for the reverse but not change his position. That's why Prashant is asking. But that why the umpire is given wide, but it's wide is given. 17 for the loss of 1 wicket. Again, Prashant. A right arm over the wicket to Trishant. Trishant, sensible batting. Absolutely sensible batting here from Trishant. Just showing all his experience. You know exactly that ball is almost targeting midline leg stump. Not only giving a full respect to that one, but the soft end comes into play to pick the single. Then scoreboard moves on to 18 for the loss of 1 wicket here in over number 3 in progress. Again, right on the block hold, but negotiated very well by Tilak. Just shuffled across, but quite confident by doing that. He picked up a single. Both the batters are doing a good job here after getting some runs in the first over. The second over, they got runs as well. They're just not losing any deliveries, the opportunity of scoring the runs. That's why they got a good runs on the board. This time they're appealing for leg before wicket. It's a very confident, but is the fact that Prashant is bowling a leg cutter, the might be that ball is just going to miss the off stump. And 19 for the loss of 1 wicket here in over number 3 in progress. Prashant again with a short run up. Right arm over the wicket delivers. This time drives that one uppishly but quite safely down to deep long on. They're running hard looking for the second. In comes the throw from the deep. But it's not a good end to throw. This is not a good end to throw because one of the longest part of the ground you are standing in the deep long on. If you're trying to return the ball towards the hands of wicketkeeper, it makes so easy for the batter to complete the couple of runs. Outstanding running between the wicket. Good placement as well after completion of over number 3. It's a 21 for the loss of 1 wicket and United Ashok Nagar looking pretty good in the middle 3 overs. They're going exactly 7 runs per over, and before the 4th over will go into start here. Once again, I would like to request senior most commentator Chandappa sir to take over the microphone in English. Thank you. So little bit correction, little bit entertainment in our state language after listening more English and Hindi. Little bit entertainment is required from Kannada language from Chandappa sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗೀತದೆ ಅನ್ನುವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 11:30 ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣ್ಣಗಾರರಿಗೆ ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ತಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೌಲರ್ ನಿಶಾಂತ್. ಓಕೆ, ನಿಶಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ನಿಶಾಂತ್ ಬಲಗೈ ಬೌಲರ್. ಮೆದ್ದೆ ಚೆಂಡು ದಂಡ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. ನೆಹರು ಕಪ್ 22ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆದಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶಾಂತ್.
ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 23 ನಿಶಾಂತ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಾಳಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟರ ಮುಂದೆ ಜಂಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸತತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. 24ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಬಲಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಂಡು ಮಾಡಿದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೂರ್ ಅವರ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. 25 ಕಾಲು ಶತಕವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹನುಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ದಾಂಡಿಗ ತಿಲಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. 26ಕ್ಕೆ 1. ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋತುಗಳಾದ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರ ಹೆಸರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾರಾಜ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27-21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಪತನ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ರಾಜ್ರವರಿಂದ. 25 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟುಗಾರರು. ಅಂದರೆ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಚ್ಚಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅವರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗದೆ ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಯ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ರನ್ನಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳ ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24ರ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಹರು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಶರವೇಗದ ಸದಕರ ಕಾರ್ಡನ್ ಬೌಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಟಮ್ ಎಜ್ಗೆ ತಗುಲಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ. ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಶೋಕನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಲಕ್ ರವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ ಸರವೇಗದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕವರ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್. ಒಂಟಿ ಜಮಯ ಆಗ್ತದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30. ಈಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಬಹಳ ವೇಗದ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ದಾಳುವ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಗಾರನ್ನು ವಂಚಿದಂತೆ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಿರಾಜ್ರವರ ತೀರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 31. ಮನೀಶ್ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಂಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ
ಥ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರಾಶೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ. ಕಾರಣ ಥ್ರೋ ಬೌಲರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೀಪರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 33, 33 for 1. ಮನೀಶ್ ರವರ ಪ್ರತಿ ಎಸೆದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಾರರು. ಇದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್. ಮನೀಶ್ ಬಲಗೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ ಸ್ವೀಪ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಲ್ಲದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರು ಕ್ರೀಸನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ 37. ಮನೀಶ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಕಡೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀಮಾಗೆರೆ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಸತತ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಮುಂದೆ 1 ಅಂದರೆ 41 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1. ಸತೀಶ್ ಸರ್, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸಗಟಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿದಂತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫ್ಲಾಗ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್. This is all about the game plan, because Trishan knows there is a batting power play, and in that batting plan there is a scoring opportunities for the batters, and he's batting on 20 runs in 16 balls. That's showing his experience, isn't it? He's a man, he's in good touch, and so far in this tournament he's got a lot of runs from the bat. But this is a semi-final, and I think in this semi-final I think only the talented batsman like Trishant can deliver, and he once again delivers a much important innings for his team, and that's what we're talking about. The experience comes into play, and he's just choosing that power play, batting power play quite well. One which is played on a delicate looking reverse stroke. He picked that one right from the middle of the bat, and another stroke he picked that one down to mid-wicket region. That a total game plan which is really working out here for United Ashok Nagar. ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತ್ರಿಶಾಂತ್. ಸಂಪರ್ಕ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾದ ಥ್ರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಆದರೆ ರನ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸನ್ನರವರ ಹುದ್ದೆಯ ಪತನದ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಹಳ ನೆಗೆತ ಜಿಗಿತ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟನ್ನು ಜಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೋ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ರವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟರ್ 2ನೇ ಓಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂತಿಮ ಓವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? Absolutely, that was a sign of the big pressure, isn't it? After conceding a lot of runs in the previous over, looks like the fielder is under pressure because they got a lot of runs here. Look at that one, absolutely terrific shot. Now Tilak is playing that reverse throw quite well, and before the fielder from cow point region to run back towards the deep backward point region, ample time for the batter to complete that couple of runs. 47, I think it's a huge total in this condition. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆಟ.
ಬೀಸೋಡದಾಗ ಕೈ ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಾಮಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಜಮತೆ ಎರಡನೇ ಓಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ ಆರ್ಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 50ರಲ್ಲಿ 1 - 49. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ 49 ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಗರ್, ಸತೀಶ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಗರ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಹಾಗಾಗಿ 49 ದಾಖಲಾಗಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಓಡಿ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನ ಘೋಷಣೆ, ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಾಯ್ಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 51 51. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮುನಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೊತೆಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಶತಕ, ಅದು ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ವೆಲ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್ ಬರೇಶ, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, 51 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? This is all about the experience, the combination actually. There's a very good understanding between the 2 batsmen. Trishant is a so experienced batsman. Tilak is another very young, talented the batsman. They got understanding it because they lost the first wicket very quickly, and after that both the batsmen took their own time to settle down. Just rotating the strike. They are not looking for the big shot, but once they settled down, they started to see the ball like a football, and especially they're taking that batting power play for the acceleration of run rate. They picked up 2 valuable wickets and 2 valuable boundaries in that over, and they managed to score 52 valuable runs and 53. They set a target of 53 to win the match. Now, I think do or die situation for Dongarakeri challengers. Dongarakeri challenge do or die situation, and you cannot underestimate the batting department of challengers. They got some good batting unit, especially leading from the front. The man who scored a lot of runs in the first 2 matches, I think Lokesh have to play a big role if they wanted to win the match. And wait and see how well they manage to climb the mountain of runs. It's really a big score against the very good bowling unit of very good bowling unit of United Ashok Nagar. I think the captain and the captain, even the owner of team Chetan, must be pleased with the performance of the 2 batsmen. That is Trishant and Trishant and of course then Tilak done a great job to get that 53 runs.
So welcome back, and 53 is the target to qualify for the finals, mega finals of this prestigious Nehru Cup 2022. And a lot of announcement coming for this second semi-final. For each and every wicket, the 500 rupees and 1,000 rupees for every 6. But I request those who are announced that prize money, they need to keep the money here. So even Dungarkir challengers, of course, the name what they got, challengers, now they have to take the challenges of United Ashok Nagar. They put a challenge of getting a 53 runs in a stipulated 6 overs, and almost the asking run rate is just kissing to 9 runs per over, just under 9 runs per over. I think it's going to be a big ask, but Lokesh is a key player for the side of challengers. If he able to talk with his bat, then he won 53. I don't think it's going to be that much of tough for the challengers to win the match. And another young talented player, Irfan, is in non-strikers end. So Nitesh, as always, will go into bowl the first over of the power play, and Lokesh will go into face the first delivery. Nitesh, right arm over the wicket. First ball itself, he went for the reverse sweep, but ball misses the bat. But umpire not missing the opportunity to get some exercise off the late night, and Shiraj signaled as a wide. The first run coming up here for challengers, 1 without loss of any wicket. Nitesh bowling with a short run up. Right arm over the wicket. Pass umpire Siraj. Again, Lokesh went for the reverse swing. Again, the direction of the ball going outside the line of off stump too far. Back to back 2 wides again. 2 without loss of any wicket. Lokesh trying for the reverse stroke that twice in that over. You know exactly if he has got a little bit contact with the bat, he will going to get the boundary there. Because only two fielders allowed to stand outside the circle in this mandatory power play. That is one at deep long on and deep extra cover. The 2 fielders outside the circle. Again, Nitesh bowling with a short run up. Right arm over the wicket. This time, straight to the hands of fielder. Fumble from the fielder, and they completed a single. Of course, this time good thinking there from the point of view of a bowler, seeing the batsman is going for the reverse stroke. Then he's just changing the line, ball outside the line of leg stump. But Lokesh did a good job because he knows that if you miss the ball, there will be a dotted delivery. So just went without push, just like a left-hand batsman tapping the ball down to gully region. So Lokesh is off the mark, 3 without loss of any wicket. So each and every over required 1 big shot so that challengers can climb this mountain of runs. But under floodlight, it's definitely going to be a big score to chase down. But in cricket, it was nothing is impossible. Cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. Down the leg stump, going to be wide. They're going for the run as well, and they completed. The 1+1, that means in just a 1 delivery, they got 5 valuable runs. Now, I think this is a catching moment. This is a catching moment for challenge Dungarkiri, because after getting 5 runs in 1 ball, then some sensible batting, thinking batting, which is definitely will going to get them into that asking run rate. So Nitesh just feeling a pressure here. 5 without loss of any wicket. Second time in this over. Nitesh right arm over the wicket. This time Lokesh, beautifully played that one. Down to deep backward rotation. Long chase here for the fielder. Ball is just slowing down. And just a couple of yards inside the boundary line. They managed to stop the ball. And here is Lokesh coming back for the 3rd run as well. The excellent looking improvisation here from Lokesh. He's trying and trying for the reverse stroke. This time he's got a very good contact with that from the bat. But still ball is not traveling because of might be a little bit extra grass in the deep backward point region. Just stopping the speed of that stroke. And batsman got ample time to complete the 3 valuable runs. Now there looks like catching
that run rate required, and even Lokesh knows that this is the 1 over, the power play. Then they got 1 over as a batting power play. They need to capitalize because they're not chasing a small total. They're chasing a big total of 53 to win the match. And scoreboard is 8 on the board. Irfan is on strike. Nitesh bowls this time. Oh, that was opportunity of run there. The wicketkeeper behind the stump, Sunil pummeled. But that ball just passing between bat and pad of Irfan. The good comeback here by Nitesh. Bowled a very good line in the negation for Irfan. But there is no chance at all for any run. The first dotted delivery of this over. Bowled by Nitesh. Right arm over the wicket to Irfan. Irfan chipped that one just right off mid-off fielder. But there is a protection given in the deep long off region. So batsmen have to settle for that. And with that single scoreboard now moves on to 9 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Now required run is just under 9 runs per over. They got 9 runs in 4 deliveries. And any runs definitely going to be a bonus for challenge in this remaining 2 balls. Now deep backward point is situated for Lokesh for the reverse sweep. And that means no one there in the long off region, and it was a gamble, and wait and see how well this gamble will going to work out. Here is again Nitesh. Bowls Lokesh slashes, but not quite able to get that timing which is looking for. Oh, looking for the second. It is quite dangerous, and he's just pulls back, seeing the ball is went straight to the hands of Tilak then, and scoreboard moves down to double figure now. 10 on the board. The good start from the opening batters of Dungarakere Challengers. 10 in the first over. They got 5 runs in first ball, but after that I think Nitesh bowled very well. Very good line and length. Nitesh bowls. Again they went for the stroke, but not quite able to get the timing right. Just a single. 11 runs came from that over. It was a good start here from Dungarakere Challengers. Just like the name they got, Challengers. They nearly taking that Challengers. They just got the invitation to get the 53 to qualify for the final, and they got 11 valuable runs in the first over. But that is a power play. Now things will definitely going to be changed here, because a lot of protection now given to the bowlers in the boundary line. So in that time, so I think some sensible batting is required for challenge Dungarakere. It's a big ground, of course, UCG ground. Then the batsman can pick singles, a couple of runs, just like what Tilak and Trishant did in their innings. The outstanding innings they played. And just like our co-commentator Chandapasar is mentioning about one of the highest partnership of this tournament, which is came in a semi-final, big semi-final, 50 runs partnership. And what an outstanding display of batting performance from Trishant and Tilak. Second over. Right arm over the wicket. Balls. Just starts with the wide, just like what Nitesh did. Thank you very much, Sir Chandapasar, for your wonderful contribution for the success of this cricket tournament. On behalf of all cricket lovers, we would like to give special thanks. This time, it's going to be a chance here for the fielder. Yes, he's gone. Long off fielder making no mistake at all. Irfan tried to hit the ball over the head of over the long off region, but not really getting that much of elevation he's looking for. Look at that one, ball high up in the air, and long off fielder is taken that catch quite comfortably. So first wicket is back into pavilion of Dungarakere Challengers in the name of Irfan. 12 for the loss of 1 wicket. So a very important breakthrough here from Pramod. So now new batsman Nishan is walking towards the middle with the jersey number 21. So all happening in here in UCG ground. It's not so easy in under floodlight to get any kind of big strokes. The left-hand batsman always known for powerful hittings, and always believes that left-hand batsmen are always having a more power than the right-hander batsman. And wait and see how the left-hand batsman will go to contribute here. Pramod from the far end, successful bowler. Right arm over the wicket. 1 second opportunity for the long off fielder. Back to back 2 wickets.
This is not a good cricket here from Nishan, facing his first ball, and he's back into pavilion. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 12 for the loss of all inside, and we can see that complexion of the match is a little bit changing after they got 11 runs in the first over. Then Pramod came in, bowled one wide delivery, but after that he picked up 2 valuable wickets. Both the batsmen are looking for acceleration of run rate, looking for some big shot, but in this situation they need to be very careful. The placement is very key. One can't see the pace in boiling water rather than the warm water. Need to be cool and calm. The sensible batting is always required, just like what Trishantis did, just like what Tilakis did in their partnership. The partnership is more important here for the chasing team. He's on hat-trick. Pramod. Right over the wicket, beautifully bowled, forcing the batsman onto the back foot. Shamsher tried to hit the ball towards the extra cover, but not really able to get the placement right, and the short extra cover fielder, Trishant, fields the ball, and there is no chance of any run. Again going down the leg stamp, they're going for the extra run. Lokesh is not interested. Lokesh is not interested, but Sunil is interested to shy the stumps, but he misses the stumps completely, and he just survived. Shamsher is tried to take the advantage of that wide delivery. 1+1 he is looking for, but unfortunately, fortunately for the batsman, the wicketkeeper misses the stump. This time across the line, Trace tried to swing that one, appeal for leg before wicket. Umpire not interested. That ball definitely looks like little bit going down the leg stump, and one more addition to total in the form of leg by. 14 for the loss of 2 wickets, chasing 54, chasing 53 to qualify for the mega final of this wonderful Nehru Cup 2022. Last 2 deliveries remaining. Last 2 balls remaining. Lokesh back on strike. He's out of the strike for a long time. Ready to face Pramod. Oh, that was a beautiful delivery. The Lokesh tried to hit across the line of the delivery. Then he's back into pavilion. That's a big wicket. Absolutely big fish in the net. For United Ashok Nagar, they got Lokesh, the danger batsman, departs. 3 wickets in that over for Pramod. They're just changing the game quite beautifully. Outstanding bowling performance here from the bowler Pramod. 14 for the loss of 3 wickets. Now they are in a deep trouble. So new batsman in is Mahesh. He is a man of the match in the quarter-final. When the match is slowly slipping out of their hands, the very important stage, hit 1-6, but here is more than the 6. Some sensible batting is required for challenge Dungar Keri. Of course, there are no other option at all, because the run rate required is climbing up. They got 12 runs in the first over, but it's not a good over for second over. After that power play, we can see that the bowlers are dominating. Picked up 3 valuable wickets. Pramod again. 5 deliveries. He picked up 3 valuable wickets. Mahesh will going to face Pramod. Went for the reverse sweep, not too far from that off stamp. Outstanding over there from Pramod. Really, it's a great over. 2 runs and 3 wickets. And it was definitely a match-winning performance, bowling performance here from Pramod. So after completion of over number 2, chasing 53 to win this match, it's a 14 on the board. Still, they have a long way to go. 39 more runs required for the victory. And the remaining 4 overs. That means 24 deliveries and 39 runs required for the victory. Almost asking run rate is just under 10 runs per over. And under floodlight, 10 runs per over is definitely it's going to be a big ask. If you have a batsman like Lokesh and other, definitely manageable. But they lost 3 front order batter in that previous over. But still, Mahesh and Shamsher is the 2 batters out there in the middle.
The cricket, everybody knows, is an unpredictable game. One big over can change the complexion of the match. But question raising here, which over they will going to choose for the acceleration. The Trishan just came into attack. One more very talented, experienced bowler. So far he's got a very good tournament from the bat and ball. Played brilliantly in their innings, and he scored a valuable 22 runs. And now he's wanted to contribute from the ball. Short fine leg, one fielder and a deep backward square leg, deep mid wicket, short mid wicket, deep long on. The first ball outside and now half time. Sunil, wicketkeeper behind the stump, fails to collect the ball. And by call by umpire, with the addition of that 1 run, scoreboard no moves on to 15 for the loss of 3 wicket. That brings Mahesh back on strike. Mahesh, who represents usually KCCR Kadri. Even once he represented Hanuman cricketers as well. In early days of his career. Top edge, leading edge, ball is in there and is it taken. The square leg fielder, the short mid wicket fielder, you need to run a lot to take the catch. It was a top edge from Mahesh, full toss delivered, but not that much of a juicy full toss. The low full toss, he tried to hit the ball down to square leg, then leading edge, the finishing the innings of Mahesh as well. 4th wicket of Dungarakeri is back into pavilion. 15 for the loss of 4 wicket there in a deep trouble. The 500 rupees for every wicket is announcement is made. That means Nitesh, in fact, Pramod picked up 3 valuable wickets. 1,500 rupees in a pocket. And the Trishan, he picked up 1 wicket. I went for the reverse sweep. Prashant, quite interesting kind of reverse stroke, overthrow comes into play. So batsman grabbing the opportunity to come back for the second as well. And they managed to complete that couple of runs quite easily. With that couple of runs, scoreboard moves on to 17 for the loss of 4 wicket. Here in over number 3 in progress. Trishant with a short run up. Full toss delivery, swings that one down to deep backward square leg boundary for 4 runs. That is the gap he chosen between the square leg and mid wicket. The juicy full toss, hittable delivery, and Prashant taking the full advantage of that juicy full toss, and he just delivered that one right in the gap, down to deep backward square leg behind the square, and he picked up a boundary, very important boundary for Dungarakeri. 21 for the loss of 4 wicket here in over number 3 in progress. Again Prashant swings that one, but this time protection has been given in the deep mid wicket region, so he need to settle for that single. So with that single, scoreboard moves on to 22 for the loss of 4 wicket. The Prashant quickly realizing, of course, they're chasing 53 is not easy. They need to take the risk. Without taking risk, I think it's a very difficult for challenge to win this match. Again, the full toss delivery. Shamsher turns that one wide nicely down the square like they're running hard. The misfield there by Tilak. He wanted to pick the ball in a right hand, single hand, pick up and throw. He's trying for, but he's just missed the ball from his hand and got a couple of runs. Productive over from the point of view of challenge Dungarakeri is concerned. They scored 24 runs in 3 overs. Not a bad one. They're going exactly 8 runs per over. The required run at just under 9 runs per over. And as coming back the equation, 24 which is deducted from 53. That means another 29 more runs required from 18 balls. 18-29. That the 11 difference between run and ball. Will it go to be a big difference? So 9.5 runs per over is the required run rate. 1 or 2 big shots will go to change the complexion of this match. So before the next ball going to start here, I would like to invite Sayyid Guru Kamla and one more very good Hindi commentator will go into share the mic in the remaining 3 overs. It's a very interesting 3 overs. Another 29 more runs required for the victory in remaining 3 overs at asking run rate of 9.33 runs per over. Thank you.
थैंक यू सतीश सर और शुक्रिया बहुत बहुत आपके, हम आभारी हैं इस टूर्नामेंट के। हालांकि देखिए रन तो अभी भी चाहिए, तो किसी भी कीमत पर ऐसे रन चुराना होगा कि एक एक रन अगर लेंगे तो शायद आपको उतना आसान नहीं होगा जीतने के लिए। दो बड़े शॉट एक ओवर में आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं मैच को, तो जिस तरीके से तो देखना है सुनील, तो इस बार भी मौके बनेंगे। वाइड +1, तो कहीं ना कहीं और सिंगल्स डबल लेंगे आप तो आपको ये मौके बनेंगे। तो सिंगल डबल लेंगे, बीच में एक एक बाउंड्री आएगा, बीच में कहीं देखिए ऐसे वापस पिछला वाइड था लेकिन इस बार सही गेंद थी। टीम का स्कोर पहुंच चुका है टोटल 28। वो बड़ा टारगेट है ये आज का टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर टूर्नामेंट का ये। बेहतर गेंद, तो क्या कहना होगा, लगातार डॉटेड डिलीवरी, जिसके बाद 2 ओवर बाकी है तो मैच थोड़ा फंसता जा रहा है, थोड़ा मैच कहीं और चला जा रहा है, थोड़ा सा दूर जा रहा है मैच बैटिंग साइड के लिए से। अगर निश्चित रूप से हम बात करें तो अभी तक यूनाइटेड अशोकनगर काफी अच्छी परफॉर्मेंस बताई है। सुबह से हम देख रहे हैं, हर मैच देख रहे हैं, हर मैच में काफी मेहनत कर रही है टीम अशोकनगर। बहुत अच्छी टीम है, माने जाते हैं कि शायद अच्छा क्रिकेटर्स है इसमें। देखिए कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, अपने बाल को हिलाकर अपनी बल्लेबाजी को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए ओवर नंबर 4 क्लोज हो चुका है। 4 ओवर के बाद पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में स्कोर जब बना था 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद 9, उसके बाद 6, तो कहीं ना कहीं 4 ओवर के बाद टोटल टीम का स्कोर बना है सिर्फ 30 रन। तो अभी चाहिए 12 गेंदों में। टोटल टारगेट की बात करें तो 23 रन रिक्वायर्ड एंड 12 बॉल। हो सकता है अगर एक बड़ा शॉट लगेगा तो मैच का नक्शा बदल सकता है। एक बड़ा शॉट लगेगा तो सिंगल डबल लेंगे तो एक्स्ट्रा कभी भी मिल सकता है। अगर एक्स्ट्रा आपको मिला तो कहीं ना कहीं मैच आ सकता है। तो मैच को लूज मत लेना, लूज कभी भी मैच को नहीं छोड़ सकते हम। जो हारने का मैच होता है वो जीत सकते हैं, जो जीतने का मैच भी हार सकते हैं। तो सतीश सर ने बताया कि कहीं ना कहीं इस मैदान में देखिए कि एक रिकॉर्ड ऐसा है कि एक गेंद पर 4 चाहिए तो भी जीत जाएंगे, अगर 2 गेंदों पे 1 चाहिए तो भी हार जाएंगे। तो ये जो क्रिकेट है ये अनिश्चितताओं का खेल है। इस क्रिकेट में हम कुछ भी नहीं कह सकते। 10 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन भैया उतना आसान नहीं है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या गेंद है रन चुराने की, जी नहीं, लेग बाइस माफ कीजिएगा 22। त्रिशांत मईन अंपायर है, स्क्वायर लेग अंपायर, जाने माने अंपायर है। कहते हैं पुराना चावल तो पुराना चावल होता है। रोलैंड सर जो अभी भी अपने नींद को, गहरी नींद में फंसे हैं लेकिन काम बेहतर कर रहे हैं और उनको मालूम है कि ये मैदान से वाकिफ हैं, वो इस मैदान को जानते हैं कौन से टाइम में कहां पे होश गिर जाती है, शबनम आ जाती है। तो आज कोई होश नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं मैच, मैदान क्लियर है, मैदान पे कोई चांस नहीं है होश आने का। गेंद सही जा रही है, थोड़ा सा पिच गीला हुआ जरूर है और कहीं ना कहीं होता है कि मैच पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन उतना आसानी के साथ गेंदबाज रन नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है हर गेंदबाज, हर फील्डर बहुत टाइट में है। तो ये कहानी, और इसके बाद फाइनल मैच है। ऑलरेडी फाइनल के लिए बंदर ब्रिगेड फाइनल आ चुकी है। तो ये जीत की कहानी, सुबह से आज बहुत मेहनत किया है बंदर ब्रिगेड के खिलाड़ियां। तो चलिए इस गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए, ये बड़ा शॉट मिलेगा या नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को देखा है, गेंद बाउंड्री के नजदीक जा रही है, क्या बाउंड्री के बाहर, इसी के साथ बेहतरीन फील्डिंग कहना होगा। तीसरे की मांग है, क्या तीसरा, जी नहीं, तीसरा हो जाएगा। क्या ये शॉट था, इसमें अगर चौका मिलता, मौका था, चौका हो सकता, लेकिन थोड़ा सा दम उस शॉट में था। लेकिन क्या करे, किस्मत खराब थी। तो 3 रन
इस इनिंग के पहले 3 रन, तीसरा रन इस इनिंग का, तो टोटल टीम का स्कोर माफ कीजिए दूसरा, तीसरा रन दूसरा, यानी 34। तो अभी इस ओवर की गेंदें 2 गेंदें अभी हो चुकी हैं, तो 4 गेंदें। तो अभी देख सकते हैं आप रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, स्कोर टोटल 34। सभी यंग बॉयज बेदरा मीडिया के सभी कैमरामैन इंतजार कर रहे हैं फाइनल कब होगा, तो ये कहानी है। तो देखना है, फाइनल पे एक टीम आ चुकी है, तो अभी कुछ मिनट या घंटों का काम रहा है। बेदरा मीडिया इरफान, आप अपनी गहरी नींद को छोड़कर इस बार शायद क्या होगा ये गेंद, शायद लाइन और लेंथ बढ़िया है। माइन स्टेज के पास नेहरू जी की याद में सभी बैठे हुए हैं। वाह क्या शॉट है ये, लेकिन क्या करेंगे, फील्डर वहां पर मौजूद। जी हाँ, शोर मचाए चोर, लेकिन इस बार तो शायद शोर मचा रहे हैं जोश में, और चाहिए ऐसा जोश चाहिए, क्योंकि नाम है यूनाइटेड अशोकनगरा, और तो उनको पता है कि बड़े बड़े बल्लेबाज को हमने आउट कर लिया, और लोकल बॉय बंदर ब्रिगेड्स के सभी खिलाड़ियां तैयार होना चाहिए। फाइनल मैच है, तो शायद उनको तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने फाइनल प्रवेश कर लिया है। तो आज डे मैच खत्म करने के बाद सतीश सालियन सर वापस हमारे साथ हाथ बटाते हुए, और उनको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि डे नाइट काम करना उतना आसान नहीं होता। अभी तो आपको मालूम है टाइम कितना हो चुका है, तो तकरीबन 12:15 हो चुके हैं। तो और इंतजार की घड़ी, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का बनाने का मकसद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक याददाश्त टूर्नामेंट, सभी लोगों ने मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज वही काम कर रहे हैं। देखिए भारत जोड़ो एंड हमारा कमेंट्री बॉक्स एंड, तो उसी तरीके से बड़े बड़े फ्लैग्स, बड़े बड़े बैनर्स, JR लोबो, उसके बाद कहीं I1 डिसोजा सर भी यहां पर मौजूद थे। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, एक बार फिर से हीरो बनने का मौका त्रिशांत के पास। एक बड़े शॉट की जरूरत है, 19 रन चाहिए जीतने के लिए, 7 गेंदें। त्रिशांत 2 अक्षय, ओह वेट किया, और ये बंदूक की गोली भी खाली गई है, कोई चांस नहीं स्ट्रोक बनाने का। एंड ऑफ द ओवर नंबर 5, and it's go Mozambique to totally stop the score 34। एंड अभी चाहिए जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदें, हर गेंद पर बड़ा प्रहार, हर गेंद पर बड़ा शॉट, हर गेंद पर बड़ा हिट चाहिए, नहीं तो मैच खत्म हो जाएगा। भैया बहुत देर कर ली है आपने बैटिंग करने में, अब चाहिए जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है, बचे हुए 6 गेंदें, क्या मैच जीत सकते हैं, कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो एंड से गेंद को लेकर तैयार, माइन अंपायरिंग के लिए रोलैंड पिंटो सर। जब शुरुआत सुबह 9:50 पर पहला मैच हुआ, तब से लेके अब तक 3 अंपायर्स अपने पैरों पर रुककर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद सक्सेस ऑफ टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद एक फाइनल बाकी है, वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। फाइनल मैच हम सिर्फ फाइनल बोलते हैं, लेकिन वो फाइनल बहुत ही रोचक होता है। तो चलिए, भारत 6 बॉल 19 रन रिक्वायर्ड।
ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मुझे लगता है कि शायद अंपायर इधर आ रहे हैं कि वाइड है, ये वाइड है। इसका मतलब है पहली गेंद मुफ्त में, कोई गेंद नहीं है। 6 बॉल 19 चाहिए थे, लेकिन इस बार 6 गेंदों पर चाहिए 17 जीत के लिए 6 गेंदों में। कप्तान तो टीम के लिए एक होता है, लेकिन अपनी सपोर्टर्स हर कप्तानी का काम करते हैं। देखिए किस तरीके से चिल्ला रहे हैं। वो होना चाहिए, अपनी टीम है भाई, कुछ भी हो सकता है। इस बार क्या हुआ? ओ थ्रो किया, लेकिन लेग बाइस। चलिए लेग बाइस, 5 बॉल, जीत के लिए 16 रन। 16 ಬೇಕಾಗಿದೆ, 5 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ। ये शॉट तो बढ़िया है, लेकिन चलिए मैच को थोड़ा सीटी बज रही है। जी हाँ, सीटी तो बजना चाहिए यूनाइटेड अशोक नगर के लिए। तो इतना मेहनत मशक्कत के बाद एक बैटिंग टीम थोड़ा सा निराश है। डोंगरकेरी के बल्लेबाज अक्षय आउट होने के बाद राजेश, सभी शांति के साथ मैच देख रहे हैं। इतना मैच देखा है, आप फाइनल देखकर जाइए, क्योंकि कितना बड़ा ये मंच है। कौन सी टीम फाइनल आएगी और नेहरू जी का जो ये कप है वो कौन घर ले जाएगा? और इनकी याददाश्त तो सबके पास है, लेकिन ये ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? तो चलिए आगे आकर तो खेला जरूर है, लेकिन क्या करें, किस्मत। जी हाँ, राजेश के पास वो ताकत है, पर्सनालिटी है उनके पास, वो हिट लगा सकते हैं, लेकिन हर गेंद पर चौका और छक्का चाहिए। जी हाँ, 15 रन की जरूरत है। 15 रन आवश्यकते, 3 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ। तो क्या पूरे छक्के लगेंगे या 2 छक्के 1 चौका, या 2 चौके 1 छक्का? क्या कुछ भी बन सकता है। कोशिश तो कामयाबी गेंदबाजों के लिए मिल रही है। थ्रो किया, और क्या त्रिशांत कर क्या रहे हैं? गेंद कहीं पे गई, कहीं नहीं लगाया। तो एक बार ऐसा होता है, मैच जीतने की खुशी में गिर जाते हैं। तो ये काम ऐसा ही हुआ। तो देखिए अभी 2 गेंदें बची है, 13 रन की जरूरत है। क्या 2 छक्के, मैच टाई होगा? मैच टाई तो होना हो सकता भी है। वाइड एक्स्ट्रा बाउंड्रीज, 2 big hit is match tie and 1 delivery dot in bat win for fielding side, यानी कि अशोक नगर के लिए 2 छक्के बनाए तो दोनों टीमें बरकरार। अगर एक भी डॉट हो जाएगा तो शायद मैच फंस जाएगा यूनाइटेड के लिए, जो जीत दर्ज की जा सकती है। चलिए जोरदार अपील। वो थ्रो किया, वहां पे थ्रो किया, लेग बाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत देर तक त्रिशांत ने अपील किया। जी हाँ, शोर शराबा चल रहा है यहाँ पे, और तो और सपोर्टर्स काफी खुश, सपोर्टर काफी खुश। ये गेंद पर ढेर सारा रन चाहिए, 11 रन चाहिए।
आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, तो चलिए फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम नेहरू कप का फाइनल, दोनों टीमों के बीच मुकाबला। जी हां, यूनाइटेड अशोक नगरा और बंदर ब्रिगेड के बीच एक और जबरदस्त मुकाबला, फाइनल मैच। मैन ऑफ द मैच और मोमेंटो डोंगरकेरी के लिए मोमेंटो दिया जाएगा, क्योंकि कहते हैं हमारी पहचान के लिए, नेहरू कप के पहचान के लिए को कह सकते हैं मैन ऑफ द मैच। जी हाँ, मोमेंटो के लिए माइन जो कप्तान है, वो नर्स है, वो माइन स्टेज हमारा वहां पर लगा हुआ है नेहरू कप का, जो माइन स्टेज के पास डोंगरकेरी। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच। चलिए, यूनाइटेड अशोक नगर के जबरदस्त हिटर, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, फील्डर, सब कुछ तैयार है। जीत का जश्न अभी एक सब बाकी है, सिर्फ एक सीढ़ी बाकी है जीत की। तो क्या वो अशोक नगर के लिए या बंदर ब्रिगेड के लिए, देखना होगा। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स पर सदस्य सालियन और कई लोग जुड़े हुए हैं। तो मैन ऑफ द मैच, and once again Trishan, man of the match, man of the match, अशोक नगरा, यूनाइटेड अशोक नगरा के मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट यूनाइटेड अशोक नगरा के लिए। काफी खुशी का माहौल, काफी जोश का माहौल, काफी जबरदस्त रोचक जीत। फाइनल मैच के लिए एंट्री कर चुकी है। फाइनल एंट्री फॉर यूनाइटेड अशोक नगरा। वेल डन बॉय, वेल डन, क्योंकि अभी भी एक हिस्सा बाकी है आपके लिए। फाइव मिनट्स टाइम, 5 मिनट्स। The man of the match, Trishan, once again, Trishan, man of the match, main stage के पास। Well done boy, man of the match, Trishan। जी हाँ, दंगरकेरे चैलेंजर्स के लिए मोमेंटो दिया जाएगा। तो फाइनल मैच में दोनों टीमें आज भिड़ रही है। फाइनल मैच, एक फाइनल मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, लेकिन एक फाइनल मैच चल रहा है उर्वा के मैदान पर। क्या होगा ये टूर्नामेंट? तो चलिए, कुछ देर के बाद, विश्राम के बाद वापस हम आएंगे माइक्रोफोन के साथ, सतीश सालियन और मैं और कहीं हमारे साथी कमेंटेटर, कुछ देर के लिए विश्राम के साथ। 5 मिनट्स टाइम है, तो चलते हैं वापस। हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, हर क्रिकेट की कहानी बताने के लिए 5 मिनट के बाद वापस इसी माइक्रोफोन पे साथ।
ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು UCG ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತಹ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The very meaningful program. Please cooperate with the organizer. Please come in front of the main stage. That was really a good program, and we are going to honor one of the legend player of Underarm cricket, none other than Sridhar Kumar. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರದ ಆಟಗಾರ ಇವರಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನ 1979ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಾದಂಥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹಲವು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ and more than 100 and above 100 titles under this captaincy. It's been a great achievement from Sridhar Kumar. Thank you very much again. Coming back to another achievement, ಇವರು ಕೇವಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು RRPI ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ UFC ಟ್ರೋಫಿ 30 ಓವರ್ನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಈಗ ಕೂಡ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಈಗ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್. 1998-99ರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್, ಅದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಕಿದಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟೈರ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ. ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 88 ಬಾಲಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 4th ಸೆಂಚುರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದರ ನಂತರ ಶಿವರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು 148 ರನ್ UFC ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು 100 ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ತದನಂತರ Ashwin Taman of Young Friends who scored 160 runs in this particular 4 centuries in this cricket ground, and Sridhar Kumar is the first one. So ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರು ಇದರ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳೂರಿನ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಠದಕನಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಕಪ್ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್.
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಟ ಈಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹನುಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್, ದ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಒಂದುಂಟು, ಅದು ಅವರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್, ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ in the field of underarm cricket. So he deserved this honor. Thank you very much, Sridhar Kumar, for taking a felicitation from organizers on behalf of 133rd birthday celebration of Nehru ji. Thank you very much. Thanks a lot. ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ DM ಅಸ್ಲಂ ರವರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ DM ಅಸ್ಲಂ ರವರು ದಿವಂಗತ DM ರಫೀಕ್ ರವರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. JM ರಸ್ತೆ ಬಂದರ್ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 1992ರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 1995 ಮತ್ತು 96ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಬಂದರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಡೀ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1999 ಮತ್ತು 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 500 ಯುವಕರಂತೆ 1000 ಮಂದಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು 2015ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕು. DM ಅಸ್ಲಾಂ ರವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಓವರ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್.
ರಿತೇಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರಿತೇಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿತೇಶ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಉದಯ್ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯ 12:45. Final toss win by Bandar Brigade. Fielding first.
So all set now for the big moment of this cricket tournament. Mega final will go into commence. And news here is that the captain of Bandar Brigade, after winning the toss, they rightly elected to field first. And a very good toss to win the match. And just winning the toss is not quite enough, but winning the match is definitely the big aim of both the teams because it's a big title. Nehru Cup 2022, absolutely it's a big titles. Both the teams doesn't want to miss this golden opportunity after coming into the finals. This is the last and final opportunity for both the teams to become the champion. They won the toss. Bandar Brigades elected to field first. Definitely they got some game plan, the strategy, and wait and see how well they will going to work out this strategy. How well they were going to implement their game plan and strategy into performance in the big final. Two umpires out there in the middle so far in this cricket tournament. From the morning till the late night, the three umpires did a great job, and under the great leadership of Roland Pinto sir. So 38 years of experience in the field of umpiring. Along with him, one more very good umpire, Mohan Eyadi. He's also got a good experience of more than 15 years. Then Sriraj, one more good umpire and experience of more than 10 years. So all we can see that the three umpires, they are the one, the responsible for the success of this Nehru Cup 2022. And done a great job, but their final time they're officiating. And as a field umpire, Mohan Eyad at square leg and Roland Pinto sir. And in the commentary box, third umpire, Sriraj. The final time will go into complete, final time in this particular tournament will go into do the job. And outstanding cricket tournament so far, and without any controversy. That was every teams which is played with a true spirit of cricket. That's very important. The discipline, what we are talking about, the cricket is all about the discipline. And all we can see that all the teams which is participate in this tournament, they played with a good spirit of cricket. And they're the one, the responsible for the success of cricket tournament. Thank you very much for each and every one. The team owners, they're the one, the responsible for the success of the cricket tournament. And they're the one, they're putting their 100% effort for each and every team. And now at last it's two teams owners might be very happy. The owner of United Ashok Nagar is very, very keen to see this big final. He is very interested in cricket. Chetan in our commentary box enjoying the game of cricket. Even the owner of Bandar Brigade, certainly he wanted to see his team as a champion of this Nehru Cup. Umpire Roland Pinto, straight away the signal coming from umpire Roland Pinto to our scorer. Of course, we cannot forget the name of Ratish, who done a great job as a scorer in this tournament. First ball right on the money, beautifully balled. That was a very good one indeed. A quicker one here from Ajay, but quite interesting to say the why is not appealing because ball is got inside edge of the batter. So first run coming up here for United Ashok Nagar, and Prasanna is got a first run for his team. Now Trishant is a hero of the tournament. He's not a hero of the previous match, but one must say he's a hero of the tournament. So far under his great leadership, not only is handling the leadership, but even handling the pressure as well. It's not so easy to come and open the innings every time. And even not only open the innings, and he's just build the innings. And when it's required some contribution from the bowling, he's contributed. A total package, one must say, here from Trishant in this tournament for his team. Now, the hero of Bandar Brigade, Ajay, will go into ball next delivery. Outside the line of leg stump, batsman wanted to sub that one. It's going to be a disaster. The disaster continues here for Prasanna. The previous match also he couldn't manage to contribute from the bat. This time again, there is no response came from Trishant. That's all happening when batsman looking for the sweep shot. He's almost bending down. Once the batsman bending down on his knees, it's very difficult to get up and receive the call from the non-striker. That's all happening in this dismissal. Trishant went for the sweep shot. His partner wanted a single, but it's Trishant couldn't manage to respond for that single, and quite unfortunately is back into pavilion.
So Nehru Cup 2022. Congress Mangalore Block Committee as well as Youth Block Committee done a great job under the great leadership of two pillars of this tournament, Rakesh Devadiga as well as Prakash Bir Salyan. Here is two more to the total. With a couple of runs and Trishant is off the mark. Quite confident looking drive and confident start as well here from Trishant. And with that couple of runs, scoreboard numbers under 3 for the loss of 1 wicket. We have a lot of support in commentary box as well. Is a man, the mastermind behind this cricket tournament. Ex Deputy Mayor of City Corporation. We have Rajneesh in our commentary box. So far, he's done a great job because he's just looking after, the commentary panel, the officials panel very well. And even never to forget the name Latish, my friend, and he was a really fantastic all-rounder. The ones for UFC cricketers, they're all done a great job. And that's all what we're seeing, that the teamwork is really working out and successful cricket tournament. This time they're appearing, flump in front of wicket. Look at the confidence what Ajay has got. Immediately he knows that after the ball is striking his legs, he's just celebrating and asking umpire to raise his finger. And umpire Roland Pinto knows that ball is definitely going to hit the middle and off stump. And Trishant, the danger man, departs of United Ashok Nagar. Not only here in commentary box, we have Ravi as well, my good friend. Of course, he's a coach of physical fitness as well as is a former kabaddi player and referee as well. So he's done a great job for the success of this cricket tournament. And all we can see that all volunteers are done a great job for the success of this cricket tournament. The first great over there from Ajay. As always, he's bowled beautifully throughout the tournament. And once again, the final time in this match, he bowled excellent to first over. The power play is always going to be the key for the success. If you bowl first over economically and wicket taking economical over, then all set we can see that the door will go into open. And what Ajay did so far in this tournament, he is the one. He's got a good start from the bowling. Not only bowls up economical over, but he picked up 2 valuable wickets. And that brings a lot of opportunity. That will give a lot of opportunity for the other bowlers to continue that performance, what he did in the first over. So Abhilash to bowl from the far end. Second over, left arm round the wicket. Passes umpire Mohan Yadi. This time they are appealing, but no need for appeal. Ball just hitting the stump is cleaning up by the beauty of the delivery. What a sharp incoming delivery. Tilak is not got no answer for that particular delivery. 2 wickets are back into pavilion. The hero of the previous match. These 2 batsmen added 50 runs for their second wicket in the previous match. And both the batters are back into pavilion. That means United Ashok Nagar looks like they're in a deep trouble. What unusual scoreboard. 4 for the loss of 3 wickets. The owner of Bandar Brigade, Samshuddin, I think is really the owner of this team, because selecting the good players not so easy for the owners, because he is the one choosing the very talented players from their wards. And then it's really good to see that they're performing very well in this big final as well against mighty United Ashok Nagar. Nicely driven, but lack of placement. Ball went straight to the hands of short extra cover. And now little bit consolidation which is required here for United Ashok Nagar. Partnership is much required. At the same time, rotation of strike is also so important. This time ball is in there. Ajay completes the catch. 3rd wicket, 4th wicket is back into pavilion. Just look at the scoreboard. It's a competition between the wicket and run. 4 for the loss of 4 wicket in the over number 2nd in progress. This is a loose stroke, isn't it? Just flicks that one off his legs, but not quite able to keep it down. The short mid-wicket fielder Ajay just moving. He's not a good fielder. In fact, he's a not good mover.
as far as the fielding is concerned. But I quickly is moving to his right and taken a good catch. And wicket number 4 is back into pavilion. United Ashok Nagar deep in trouble now. Abhilash picked up a 2. Ajay picked up a 2. Both the opening bowlers just dismantling the batting department of United Ashok Nagar. So new batsman in. Pawan will go into face Abhilash. Left arm round the wicket. Balls. This is the one. This is the one what Abhilash sometime is doing the mistake, because there's tremendous pressure for the incoming batsman. When you balls that wide delivery, that will go to release the pressure from the batsmen. Again, beautifully ball. Looks like it's got a little bit inside edge of the bat, but a very difficult chance for the wicketkeeper behind the stump. Little bit is an off volley for the wicketkeeper behind the stump. After that ball, he's got an inside edge of the bat, and no damage done. 5 for the loss of 4 wicket. Sensible batting, pushing the ball right in the gap, rotating the strike is so important here. Abhilash, so far it's a good over. After the first good over there from Ajay, the 4 runs which is conceded. Now 2 runs in this particular over in 5 deliveries, and he picked up 2 valuable wickets. Now partnership is more important here. Sunil will go into face. Went for the sweep shot, appeal for leg before wicket, half-hearted shot, not that much of confident enough to get the result in the favour of bowler, but certainly it's a leg by call by umpire Mohan Ayyade. 2 very good overs going in favour of fielding side. After winning the toss, elected to field first. Looks like Bandar Brigade are in the right position, and but I don't think United Ashok Nagar is in the right position there. Just looking at the scoreboard, not a healthy scoreboard. 7 for the loss of 4 wicket. But still, 4 overs to go. And United, if bat sensibly in the remaining 4 overs, that means 24 balls remaining in the innings, excluding wides and no balls. And any runs around 24 to 30 in the remaining 4 overs, then it's going to be a good score under this condition, 37 to 40. And first priority of this batter, definitely they are looking for one partnership, which is much required here for United Ashok Nagar. Otherwise, it looks like Bandar Brigade will going to dominate this match. Vijay brought into attack, younger brother of Ajay. So far, 2 brothers did a great job for the success of their team, Bandar Brigade. Now Vijay got 1 fielder at deep backward square and 1 on a deep mid wicket. There is a deep long on. That means 3 protection has been given in the deep in the on. In the offside region, there is a deep extra cover. There is no deep cover point, but there is a field and a deep backward point for the reverse stroke. Vijay. Bowls. Straight to the hands of Abhilash. Chance of run out. Throw is up to the mark. But umpire says not out. He's asking for the third umpire. He doesn't want to take any kind of risk in the occasion, because sometimes it's very difficult for the square umpire to see when the wicketkeeper coming right in front of the square umpire try to make the run out. But umpire have to see whether the ball is in the hands of the wicketkeeper or not. That's what umpire Mohan Ayyade have to see. That's why he's asking for the third umpire. Sriraj will go into give the decision by looking at the angle which is provided by the technicians of Bedra Media, Irfan. So far, Bedra Media done a great job. They're the one responsible for the success of the cricket tournament. Bedra Media, through Bedra Media, a lot of, I think, 85k viewers already enjoyed this Nehru Cup 2022. All because of the popularity of Bedra Media. They got a lot of subscribers, lot of followers, lot of viewers. The not out, which is a call coming from umpire, third umpire Sriraj. Yes, Mohan Ayyade, he knows that. He knows that ball is not in the hands of wicketkeeper. That's why he's not interested. But still, he doesn't want to take any risk in the occasion, because this is a big final. He doesn't want to take any chance here. And then he's just asking for the third umpire. So 8 for the loss of 4 wicket. Over number 3 in progress. Vijay back to his bowling mark. Inside the ring, there are 3 fielders in the offside, 1 in the on. Short mid-off, short cover point, short third man. Vijay, right arm over the wicket. Balls this time, sensible batting. The very good batting, very sensible batting here from Pawan. You know exactly the rotation of strike is more important here, because if you're looking for the big shot,
losing one more wicket, putting them into lot of pressure. So 9 for the loss of 4 wickets as Vijay bowls away from us. Right arm over the wicket balls. Looking for the sweep shot opportunity there for the wicket keeper, but actually almost the batsman is looks to be thought that the ball went towards a fine aggression, but ball is not too far from wicket keeper behind the stump, and there is no possibility of any run at all. 9 for the loss of 4 wicket. Vijay again bowling away from us. Right arm over the wicket and bowling wide off the crease this time. Again sensible batting. Both the batters are doing a great job here. Just rotating the strike. Try to build the partnership, which is more important. They're in a difficult condition. 10 for the loss of 4 wicket. He won the difficult condition, but the difficult roads always leads to beautiful destination. And the beautiful destination here for United Ashok Nagar is 35 to 40. And again one more single. Really they are rotating the strike very well. Frustration for the bowler sometime when you are using that technique of pushing the ball here and there and rotating the strike. 11 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Vijay, 3 in progress, little correction. And last time in this over, 5 singles in this over. 4 singles, little correction, 1 dotted delivery. This is the 5th one. This is the 5th one, and the batsman definitely will go to settle for the single. Protection has been given in the deep mid wicket. So one more good over. The 5 runs came from that over as a point of view of United Ashok Nagar is concerned. This is a better over compared to last 2 overs. 5 runs which came from that over. So after completion of over number 3, it's 12 for the loss of 4 wickets. Searching for the right track, and before the next over going to start here, I would like to invite Syed Guru Kamla sir for the further explanation of the match in our national language. And Syed ji, before I hand over the microphone to you, what do you think about this big final? Both the teams is well balanced, isn't it? They've done a great job to coming into the final. And in the big final, I think very good toss to win. And after winning the toss, implementing the strategy and the game plan is so important. And I think so far, the 3 overs, which is going in favor of fielding team, 12 for the loss of 4 wicket. What do you think? How many runs it's required now in the remaining 3 overs if they wanted to defend this total in the big final? जी हाँ सतीश सर, हालांकि ब्लॉक करके रखे हैं, रन नहीं बन पाए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि शायद ये दुबलेबाज है, उन्होंने ज्यादा कोई बड़ा हिट नहीं किया. इसके बीच आप कहने का मतलब ये है कि शायद बहुत देर के बाद एक एक्स्ट्रा रन मिला है. तो तीसरा ओवर खत्म होने के बाद तो आपको ये पता चल रहा है कि ये टीम इतनी स्लो कैसे स्कोर बनाई है, क्योंकि ये टीम बहुत जबरदस्त थी. जो कि अशोक नगर इस बार भी गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर बना रहे हैं. निश्चित रूप से आपका जो कहना है कि शायद ये टीम अब क्यों बल्लेबाजी नहीं कर रही है, जो टॉस जीत रहा है वो ज्यादातर मैच जीत रहा है. जो टॉस आपको वो एक चांस बनता है मैच को किस तरीके से लेना. ओ बेहतर गेंद अंदर नीरोल की तरफ गेंद आई है. अंडरम क्रिकेट में देखिए आप उतनी आसानी से आप सिंगल डबल नहीं ले सकते, क्योंकि शायद अगर वो होरम मैच हो तो कहीं ना कहीं हुक शॉट, कुछ अलग शॉट खेल सकते हैं. लेकिन अंडरम में टाइम नहीं है. अंडरम में जो गेंद है वो पूरी तरीके से फास्ट होती है. इस बार भी वाइड, इस ओवर का दूसरा वाइड. टोटल स्कोर यहां पर बन चुका है. बड़े आराम से एक रन ले रहे हैं यूनाइटेड अशोक नगर के लिए. इस टीम के सामने थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. विकेट देखिए कितने विकेट जा चुकी है. देखिए त्रिशांत भी इस बार बल्लेबाजी नहीं किए. सेमीफाइनल में भी अच्छा किया था उन्होंने. जी हाँ, क्वार्टर मतलब हर मैच में भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया था त्रिशांत ने. पता नहीं कि शायद जब इस टीम के सामने क्या घुटने टेक रहे हैं, पता नहीं. स्कोर तो थोड़ा सा चल रहा है. अच्छी बात यह है कि शायद 18 रन हो चुका है. जोरदार अपील. मोहन यही गाड़ी मेन अंपायर है. स्क्वायर लेग अंपायर पर उर्वा की शान, जो कि इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर रोलैंड सर मिडनाइट में अंपायरिंग का काम संभाल रहे हैं. बहुत मुश्किल होता है अंपायरिंग का काम संभालना. हालांकि शायद अपनी गहरी नींद को छोड़कर एक और अच्छी गेंद. तो चलिए ओवर की समाप्ति.
शाहरुख ने आखिरी ओवर पूरा कर लिया है। टोटल 4 ओवर के बाद टोटल टीम का स्कोर बन चुका है 24 ओवर क्लोज एंड 2 ओवर रिमेनिंग, यानी कि फाइनल मैच का कहानी देख सकते हैं आप। तो देखिए तकरीबन कितना टाइम हो चुका है, बहुत रात हो चुकी है, फिर भी अंपायरिंग में कोई पलक नहीं है, झपक रहे हैं। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले शुरू होने जा रहा है। फील्डरों को एक चांस, बल्लेबाज एक बड़े स्ट्रोक इस टीम पर बहुत आत्मविश्वास दिए हैं। यूनाइटेड अशोकनगर, ये टीम बहुत खास है, शुरुआत से ही मैच को पकड़ती है यूनाइटेड। और बंदर ब्रिगेड, ये भी आज के दिन की फेवरेट टीम है, ज्यादातर हर मैच भी अच्छा खेली है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि ये फाइनल मैच अच्छे तरीके से हो, तो देखना होगा। तो बचे हुए कुछ ओवर बाकी है, तो क्या ये ओवर 2 ओवर में कुछ रन बनेगा? जी हां, जरूर बनेगा। 2 तो आराम से, तीसरा तो मिलेगा। और डायरेक्ट हिट, बीच में अपना हैंड आ चुका था, बहुत ही क्रूशल रन था ये। अगर वो जो हाथ अगर बीच में नहीं आता तो शायद डायरेक्ट हिट होता, तो वापस फिर थर्ड अंपायर के लिए होती। कॉल, अंपायर का जो कॉल होता वो थर्ड अंपायर के लिए होता, लेकिन किस्मत अच्छी थी वहां पर बल्लेबाज की कि फील्डर का और गेंदबाज का हाथ गेंद पर लगा, तो कोई चांस नहीं। देखिए देखिए किस तरीके से दौड़ रहे, देखिए देखिए कम से कम 1 बज चुका है, लेकिन फिर भी दौड़ बहुत जबरदस्त दौड़ रहे हैं। इस मैदान की खासियत देखिए, कितना क्लियर मैदान है। फाइनल मैच में एक एक रन इंपॉर्टेंट हो जाता है सतीश सर, क्योंकि हर गेंद पर जब पहली बैटिंग कर रही हो या दूसरी बैटिंग कर रही हो, हर एक रन बहुमूल्य हो जाता है। तो देखिए कितना क्विक रहते हैं गेंदबाज, कितना क्विक रहते हैं फील्डर, कहीं से 1 रन भी निकल ना जाए। तो देखिए मेन स्टेज पे कितने लोग बैठे हुए हैं ये फाइनल मैच देखने के लिए, कितनी गहरी नींद को छोड़कर। कल ड्यूटी भी रहती है, फिर भी इस मैच को कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि नेहरू कप साल में एक दिन जन्मदिन होता है हर इंसान का। वो जन्मदिन के मुबारक में नेहरू कप बनाया है। इस बार भी शायद अपील किया। तो चलिए, ओवर समाप्त हुआ है। 5 ओवर के बाद रनों की संख्या टोटल में आप बताना चाहूंगा मैं, 27 रन 27 5 ओवर क्लोज। पहले ओवर में 4, 2, 5, 8 और इस ओवर में भी 5, तो स्लो तो है जरूर। यहां एक्स्ट्रा 22 सब मिलाकर टोटल स्कोर यहां पर पहुंच चुका है 27। सभी कार्यकर्ता, नेहरू कप के सभी ऑर्गेनाइजर अभी भी बिना पलक झपकते हुए मैच को देख रहे हैं। ऐसी गहरे नींद में कोई यहां पर चांस नहीं है, फिर भी इस मैच को पूरा करने के लिए सर पर कफन बांध के आए हैं। इस मैच को पूरा करना है, इस टूर्नामेंट को सक्सेस करना है, तो शायद नींद कहीं चली जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये फाइनल मैच है, बड़े अच्छे तरीके से देखिए दर्शक अभी भी मौजूद है। ये क्या हुआ, फ्री डिलीवरी, डायरेक्ट हिट। थर्ड अंपायर, जी हाँ थर्ड अंपायर। इससे पहले ओवर में होना चाहिए था, लेकिन इस ओवर में हुआ है थर्ड अंपायर। तो चलिए, श्री शांत भी यहां पर मौजूद है, बहुत नजदीक करीब से टीवी को देख रहे हैं। क्या सिग्नल आएगा, इंतजार रहेगा। यूनाइटेड अशोकनगर के लिए धड़कनें बढ़ेगी। तो टोटल की हम बात करें, अगर ये रन आउट ना हो तो शायद 28 होगा, अगर रन आउट हो जाएगा तो 27 होगा। जी हाँ 28 हो जाएगा, अगर यहां पर बहुत नजदीकी मामला है।
डिसीजन पेंडिंग पे है, तो क्या मोमेंट है ये देखना होगा। बहुत नजदीकी मामला है ये, कम से कम 8-10 बार भी अगर रिप्ले करेंगे तो शायद उतना आसान पता नहीं चलेगा। तो टोटल तो स्कोर बन रहा है, इसके बाद क्या वो रंग लाएगा, कुछ गेंदें बची हैं अभी। नॉट आउट करार दिया है, लेकिन वहां पर व्हाइट के लिए चर्चा हो रहा है थोड़ा सा। व्हाइट का जो, जी हाँ, शायद अंपायर भी बता रहे हैं कि व्हाइट डिसीजन भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं शायद, माफ कीजिएगा, तो क्या होगा, नॉट आउट करार दिया है, लेकिन
जी हाँ, नो बॉल का निर्णय दिया है यहाँ पर काफी सूझबूझ के बाद, सोच समझ के बाद। नो बॉल +1 यहाँ पर जिस तरीके से हुआ तो 2 रन मिले, 1 रन दौड़ा और 1 रन नो बॉल का। तो चलिए टोटल स्कोर 29। और ये क्या, शायद बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन इस वक्त दौड़ी है, दूसरे रन की मांग, लेकिन वापस इस बार बल्कि 2 नहीं 3 रन साथ में, 2 रन दौड़े, 1 और एक्स्ट्रा। बहुत ही खराब गेंदबाजी, काफी देर के बाद गलत यहां पर गेंदबाजी हो रही है बंदर ब्रिगेड के लिए। 2 रन एक्स्ट्रा, 3 रन एक्स्ट्रा, वाइड, नो बॉल्स, सब कुछ यहां पर देखने को मिला। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32, 32 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ। फाइनल मैच का रूप देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं फाइनल एक्स्ट्रास। बहुत करीब से गेंदबाजी, तो एक्स्ट्रास भी गिरे, नो बॉल भी गिरे, रन भी दौड़ा, अभी भी नो बॉल जारी, फ्री हिट, नो बॉल के साथ फ्री हिट भी जारी है। और एक चांस, विकेट का चांस, नो बॉल पे भी विकेट मिला है। ये अजीबो गरीब, पिछले बार रन मिल रहे थे, इस बार विकेट मिल चुका है। एक खराब गेंदबाजी में एक अच्छा चांस मिला विकेट का, वो भी पूरा कर लिया। टोटल टीम का स्कोर यहां पर बन चुका है यूनाइटेड अशोक नगर का 4 विकेट के नुकसान पर। रनों की संख्या 32। और एक और थर्ड अंपायर, क्या होगा निर्णय देखेंगे अभी, सीधा थर्ड अंपायर के पास। ये ओवर में बहुत कुछ हो रहा है, नो बॉल, एक्स्ट्रास, रन आउट, बहुत कुछ हो रहा है इस ओवर में। ये आखिरी सज्जद का आखिरी ओवर। चलिए रेड सिग्नल, इसका मतलब है आउट। काफी देर के बाद एक और डिसीजन पेंडिंग था, लेकिन उसको भी क्लियर कर लिया श्री शांत ने, तो आउट का निर्णय दिया। पिछले बार से अभी तक इस ओवर में 2 थर्ड अंपायर के निर्णय मिले, तो एक अच्छी बात है कि शायद लगातार 2 गेंदें डॉट होने के बाद, तो अभी भी इस ओवर की गेंदें बची हुई है 4, 4 more to go लास्ट 1 साइड इनिंग। तो एक इनिंग खत्म होने के लिए 4 गेंदें बची है। टोटल टीम का स्कोर अभी भी रुक चुका है 32, 32 रन 32। तो क्या ये 4 ओवर में कुछ रन बनेगा, देखना होगा, कुछ रन बनना जरूरी है। फाइनल मैच, कुछ टारगेट रखना होगा, कुछ स्कोर बनाना होगा, कुछ अपनी टीम का सहारा बनना होगा। दोनों बल्लेबाज, 4 गेंदें बाकी है। गेंद को पटकते हुए, बहुत स्लो गेंद थी, बैट से ज्यादा कुछ बड़ा शॉट नहीं, सिंगल तो मिलेगा।
यूनाइटेड अशोकनगर के लिए 33 स्कोर बोर्ड में 3 गेंदें बची हैं नेहरू कप के एक साइड इनिंग खत्म होने के लिए। जोरदार अपील, बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन सीधा विकेट पर लग रही थी गेंद, सीधा लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू। गेंदें लॉस हो रही है, गेंदें मुफ्त में जा रही है, कोई रन नहीं बन रहा है आखिरी ओवर में। टोटल स्कोर रुक चुका है 33। अभी 2 गेंद से 2 गेंद फेंकना बाकी है पहले इनिंग के लिए। बहुत सारे विकेट, सुनील, तिलक, त्रिशांत, प्रसन्ना, उसके बाद भरत, पवन, नितेश इस वक्त और जितेंद्र। एक और स्लो गेंद, फील्डर उसके नीचे, बड़े आराम से लॉलीपॉप कैच, लॉलीपॉप कैच। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, इनिंग का आखिरी गेंद। बड़े बड़े हिटर खिलाड़ी फाइनल मैच में नहीं चल पाए। बंदर ब्रिगेड बांध के रख दिया है रन को बनाने में। यूनाइटेड अशोकनगर के लिए अपनी बोलती बंद कर चुके हैं लेकिन मैच में स्कोर तो बरकरार है। एक बड़ा शॉट चाहिए, बॉल टू बॉल स्कोर अगर बनेगा तो अच्छी बात है। यूनाइटेड अशोकनगर के लिए एक गेंद बाकी है आखिरी 6 ओवर की। टोटल टीम का स्कोर बन चुका है 33। एक बड़ा शॉट लगेगा, कोशिश करना होगा, जीत का स्कोर बन सकता है अगर एक छक्का लगेगा तो। नहीं नहीं, बेहतरीन गेंद, बेकार में ओवर चला गया। ये एक्स्ट्रा जरूर मिले, रन जरूर मिले लेकिन बैट से कोई रन नहीं ज्यादा बना। तो चलिए, एंड ऑफ द वन साइड इनिंग एंड टोटल स्कोर मूव्स अप टू 33, टारगेट जस्ट 34 फॉर 36 बॉल। 36 गेंदे 33 रन बनाना होगा नेहरू कप की इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए। बंदर ब्रिगेड, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करना होगा यूनाइटेड अशोकनगर के लिए। काफी देर हो रही है, इंतजार मैन ऑफ द मैच का, मैन ऑफ द सीरीज का, बेस्ट ऑलराउंडर, प्ले ऑफ द मैच, कौन सी टीम किस तरीके से जाएगी, किसके पास वो चांस है इस कप को अपने घर ले जाने का। तो देखिए आगे का हाल हमारे सतीश सालियन कमेंट्री बॉक्स पर किस तरीके से सुनाएंगे। देखना है कौन सी टीम अव्वल नंबर पे आएगी आज के दिन।
Welcome back. So 34 to become the champions of Nehru Cup 2022, and after winning the toss, elected to field first. Bandar Brigades managed to restrict the very formidable batting department of United Ashok Nagar for 34. But this 34, if anybody think that, thinking that it's going to be a one-sided game, please don't leave this ground, because this match is definitely going to be more interesting, seeing the fact that the bowling department, what Ashok Nagar United has got, they're definitely going to fight with this total 34 to become the champion, and hard work certainly which is required from the batting department of correction for Bandar Brigades. So opening batters came into middle. Ajay is in non-striker's end. Shahrukh is in non-striker's end. Left and right combination. And wait and see how well these two opening batters will go into start the innings here. And the power play over certainly is going to be more important for both the teams. As for the Ashok Nagar United winning perspective, they certainly wanted one good over, the power play over. They wanted to be the wicket taking an economical over. And from the perspective of winning perspective of Bandar is concerned, they wanted to get some good score in this power play over. And two power play over, one is mandatory and another one is a batting power play, will going to play a big role in this particular match. Big final, the mega final of this prestigious Nehru Trophy 2022. So start with the first over. Nitesh will going to start the proceedings from the commentary box end to the left-hand batter Shahrukh. For Shahrukh, one at deep backward square leg, one at a deep long on. The two fielders in the deep. First ball nicely turns that one down to square leg region off the toes, and ball is a sharp incoming delivery there from the bowler, and batsman negotiated very well to pick the single down to deep backward square leg. One without loss of any wicket here in over number first in progress. That brings Ajay into strike now. Got a very good tournament, just like what Trishant has got a good tournament from the bat and ball. And for Bandar Brigade, Ajay really got a very good tournament from the bat and ball. He will go into face his first delivery. Nitesh bowling with a short run up. Right arm over the wicket. Again, nicely bowled. Sharp incoming delivery. Once again, extra turn here for Nitesh. Almost keeping the batsman quiet in the negation. Ajay tried to make a little bit room to play the shot, but he's just following the batter and not really settle the batsman for the inside out cricketing stroke. Single. With that single scoreboard numbers on to 2 on the board. This time he lofted, handsome looking lofted drive over the head of the infield, down to deep long off boundary. Looks like that ball going to win the race. No, it doesn't, just inside the boundary line. The fielder from the mid off had a great run towards the deep long off, and just inside the boundary line managed to collect the ball, and just a couple of runs here from for Shahrukh. It was really good looking stroke there from Shahrukh. This time towards the mid-on region, long on region, over the head of mid-on. Again the chase here for the fielder. Again the batsman coming back for the second. This time Ajay completed that second run quite easily in the end. So intention is very clear here from Shahrukh. You know exactly this is a power play, and you know the scoring opportunity is always created in this first over of the power play. One is down to deep long off, one is due towards the deep long on. And just is reading the fielding condition very well. And as for the fielding condition, he really playing quality looking strokes. One at offside, one at onside region. The scoreboard 6 on the board. Now a lot of headache here for the captain. What mastermind will going to do here? He certainly is keeping one fielder in the deep now. Mid-on going back to deep long on. There is no field in a deep backward square. Like it's definitely going to be a big gamble. Hitesh bowls. Again, batsman drives that one right in the gap. There is no mid-on at all. The long on fielder need to run front to collect that one. And ample time for the batter to complete the single. The good start, positive start by these opening batters. 7 without loss of any wicket here in over number first in progress. Nitesh bowling with a short run up. Away from us. Right arm over wicket to Ajay. Ajay this time again, that's a sharp incoming delivery. Not really able to get the
get the timing behind the stroke inside edge of the bat. He will going to keep the strike for the next over. Completion of first over. Good start here for Bandar Brigade. They managed to score 8 runs without loss of any wicket. Just coming back to the equation, 8 which is deducted from 34. That means another 26 more runs required for the victory and the remaining 30 deliveries. They certainly looks like the equation favoring the chasing team, but everybody knows that cricket is a game of glorious uncertainty, and certainly if you wanted to see the uncertainty in this game, and United Ashok Nagar needed one good over. The wicket taking over is a must required here for United if they wanted to back into this game. So Ajay takes a fresh guard from umpire Mohan Iyadi. And Pramod, the hero of the previous match, who picked up 3 valuable wickets and dismantling the batting department of Dungarakeri Challengers in the second over, is now came into ball from the far end. So 1 hour mandatory power play is completed. Very interesting to see that when and how the batting power play going to used in this big final. This is really going to be the very interesting to see the addition of the chasing team. So a lot of fielding adjustment is going on. After that the fielding restriction is off. After that power play, we can see that so many fielders in the deep. Long on is there, long off is there, deep mid wicket is there. Deep backward square leg is there, and one at deep cover. This time, chip that one straight to the hands of fielder. He drops the catch. He drops the catch. It's going to be too crucial. It's going to be so crucial in this big final. It's a dropping the catch means you are dropping a match from your hand. Catch wins the matches. That is the greatest slogan of cricket. In this big final, you cannot do that kind of mistake, especially to that batsman like Ajay. He's a very dangerous batsman. Now 10 on the board. The powerful striker of the ball, Ajay, especially to one of his strongest zone, deep extra cover and deep cover point, and he got a life. Pramod from the far end. Right arm over the wicket, a full toss and swinging that one down to deep mid wicket region. The ball will go to cut it off, but here is a batsman tossing off for a couple of runs. So Hitesh started to feel the pressure here. 12 on the board. 2 balls, 4 runs. 1 chance which is given to Ajay. Definitely will going to capitalize that chance which is given to him. Pramod a little bit having some conversation with the Trishan. Now he's back to bowling mark. Right arm over the wicket delivers. Oh, what a shot. That was a mighty. No need to run for that. Ball went like a tracer bullet. Just like what I'm mentioning about. You cannot do the mistake. You cannot give the chances to batsman like Ajay. He is such a fantastic striker of the ball. And 500 rupees straight away into the pocket of Ajay. 16 without loss of any wicket. Just picking up the line and length so quickly. That was a really instrumental sound which came from the bat of Ajay once the ball has got a contact with his bat. Just look at the placement he's taken. There is a deep mid wicket, but there is a deep long on, but he's just choosing the cow corner to get that boundary. 16 without loss of any wicket. Pramod bowls left the ball, rightly so, under pressure. The bowler started to feel the pressure. 17 on the board. Without loss of any wicket, they're cruising towards a victory. Half of the job is completed in just 1.2 deliveries, 3 deliveries. Now they have to complete another half of the job in the remaining deliveries. This time again going for the mighty stroke. This time he didn't got that much of enough timing in that stroke, but he managed to pick the single down to wideish long on. With that single, scoreboard moves on to 18 on the board. So now, little bit relax here for the bowler. Ajay is out of the strike now. The left-hand batsman back on strike. 18 runs partnership for the first wicket. Quick fired 18 runs.
Again, bowler bowling from the far end. Pramod. Ball Hitesh, appeal for stump out is given, is gone. Umpire Roland Pinto now in a naked eye. You know exactly the batsman is just struggling to reach, to keep his leg to the crease. And he's out of the crease, and the wicketkeeper completes the job. The first wicket is back into pavilion of Bandar Brigade. The last thing they wanted to see here for the fielding team, they wanted to break this partnership. And Pramod at last managed to pick the wicket here. 18 for the loss of 1 wicket. So 18 for the loss of 1 wicket. Abhilash, one more experience, very stylish, technically sound, and excellent left-hand batter, just came into middle. He's got experience of playing for Gori Young Boys. Now he's representing for the Elegant Cricketers. And in this particular tournament, he is representing his ward, Bandar. And now number 3 is always going to be a key position. Only good players having that position. Look at that one. Look at that footwork. Absolutely technically very sound. No way to miss the opportunity to chip the ball into the deep long on region for a single. He will going to keep the strike for the next over. And one more fantastic over for Bandar Brigade. Even they lost the wicket of Hitesh, but nothing much bother about that wicket because they got a run what they really wanted. 19 runs which is scored in 2 overs at the rate of exactly 9.5 runs per hour. And the remaining 24 deliveries, they have to get another 15 runs. 15 to get, 24 to go, 9 wickets in hand. Looks like Bandar Brigades, they are in a driver's seat of winning this match. Unless any miracle and magical bowling is badly required here for United Ashok Nagar if they wanted to back into this game. The wicket-taking bowler, the needed in this situation, the wicket-taking bowler as well as the economical bowler is needed in this particular over so that they can back into this game. But so far it's a good going here for Bandar Brigade. Now Trishant is the hero of the tournament so far. I'm already mentioning about there is 2 icon players in both the teams. One is Ajay for Bandar Brigade, got a fantastic tournament from bowl and bat. Now is a Trishant, is a man with the golden hand. Now just came into ball. Wait and see what he will going to do the magic here. Right arm round the wicket, he will going to deliver to Abhilash. Nicely turns that one. He's a good player actually. The perfect player when it was a condition is just like when it was rotation of strike is required. He will definitely not bother about that to do that. But it's always going to be a good contest between these 2 batters now. These 2 players. One is the man is on strike. The one is the bowler. The bowler one has got a ball in his hand. It's a really good contest between one good batter against the bowler. Trishant. Bowling right arm. Over the wicket. Again, nicely driven down to the mid-wicket region. Ajay shuttled down in the middle. He looks so confident. Look at his body language. He looks so confident after hitting the boundary. Then no need to panic at all in the relegation. Just rotation of strike make them to become the champion of this prestigious Nehru Cup 2022. 21 for the loss of 1 wicket. 13 more runs required for the victory. Trishant again. Bowls. Lack of placement straight to the hands of short mid-wicket. And the flick of the wrist comes into play in the negation there from Abhilash, but not really able to get the placement right. Trishant bowls a dead delivery. Trishant bowls again outside the line of off stamp. It's going to be a wide. Yes, it is. Very, very difficult for the umpire to sight because of dust we can see then the pitch. Very difficult for the umpire. So 22 for the loss of 1 wicket. Again, turns that one in the onside region. And a little bit bat involved in the negation for Abhilash to pick the singles. 23 is 23 for the loss of 1 wicket. Just 11 more runs away from the victory here. Trishant trying his level best to break this partnership, to pick some wickets and bowl some dotted deliveries. Oh, beautifully bowled. A flighted one. Lot of turn in this over. The last weapon what Trishant wanted to use against Ajay to bowl that slow leg cutter in the negation. Waiting and at last Ajay has managed to get the bat onto that ball. He picked up a single for that at 24 for the loss of 1 wicket. Trishant
Was a beautiful drive. Look at that square cut. Excellent one in the area from Abhilash. Delightful stroke. Picked a single down to backward point region. So one more over completed. Again, the Trishant, I think, is not really bothered. I think he is not really give any kind of trouble here for the batters. The 25 comes up here for Bandar Brigade. 25 for the loss of 1 wicket. Now last 3 overs remaining and 9 more runs required for the victory. And I think before the 9 to get. Chip that one towards the mid wicket. They're running hard for the second. In comes the throw from the Abhilash. Have to run hard. And they completed a couple of runs here. With that couple of runs, scoreboard moves on to 27 for the loss of 1 wicket. Just 7 more runs away from the victory. Driven that one officially down to deep long on region. And he picked up a single for that. 28, 6 to get. And plenty of deliveries remaining. Both the batsmen are looking comfortable in the middle. The bowlers of United Ashok Nagar really fails to do anything in this particular match. And that's only because of these 2 batsmen, especially the Ajay is picked up around some runs in the first 2 overs. Look at the stroke, beautifully driven along the ground down to deep extra cover region for a single. One of his strongest scoring zone. If you see it is wagon wheels where you're getting some runs. It's always a very strongest area. Extra cover, long off and deep cover. This time lovely shot. Look at the reverse stroke. Doesn't look like the left-hand batsman played that stroke. It looks like that the proper right-handed batsman hitting that orthodox slog sweep shot and ball running down to deep backward point boundary for 4 runs. So scores are level. 500 rupees for Abhilash for that boundary. Just 1 run away from the victory to become the champion. Everybody coming inside the ring. Just 1 run for the celebration to the champion. They have to wait for the 1 more delivery. They need to wait for that other delivery. Abhilash having a big smile in his face. Friendly smile towards Trishant is the wicket keeper. Here is our ball pitching outside the flag stamp. That's it. The champion of the Nehru Cup 2022. It's a Bandar Brigade. It's really a comprehensive victory in the final, defeating United Ashok Nagar by 9 wickets. And they really deserve the champions title of this prestigious Nehru Cup 2022. Congratulations, Bandar Brigade. Congratulations for United Ashok Nagar. Really played a good game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but they played a very good game of cricket in this particular Nehru Cup 2022. Thank you very much, each and everyone. And we are straight away going into the post-match presentation ceremony. Till then, we are saying goodbye from our commentary box. Thanks very much, everyone. Those who are really done a great job in a commentary box. A special thanks to senior most commentator Sayyid Gurukamla for your entertainment for this tournament. Thanks to Chandappa sir and other commentators. So thanks to our scorer Ratish Raj, done a great job as a scorer, and thanks to all the officials. Thank you.
ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ರಜನೀಶ್ನವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ರವರು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request officials of this tournament please be reported in front of presentation dais. Umpire Roland Pinto, umpire Mohan Eyadi, and I request Sriraj, our scorer, and I request our commentator Syed Gurukamla, and I request the proprietor of Bedra Media, please be reported in front of dais for the presentation ceremony. ಫೈನಲ್ನ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಬಂದರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಯೀಮ್ ರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ತಂಡದ ಚೇತನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಇವರು ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. So once again, welcome to the presentation ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದಂಥ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So we are into the presentation ceremony. It's already
too late. Without wasting your time, we are coming to the important stage of this prize distribution ceremony. Of course, if you wanted to organize a cricket tournament very successfully, of course, the officials are so important. And in this tournament, so far, the three umpires did a great job. So big hand for three officials, Roland Pinto, Mohan Yeyadi, as well as Sriraj. May I request ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದಯಮಾಡಿ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊನ್ನೂರು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡು ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ರೋಲನ್, more than 38 years of experience in both underarm and overarm cricket. So big hand for Roland Pinto sir for a wonderful job. So I request Mohan Yeyadi, please come forward. Mohan Yeyadi sir, please come forward. So big hand for Mohan Yeyadi, one more reputed umpire, done a great job for the success of this cricket tournament. Mohan Yeyadi will go in to collect a memento from our chief guest. I request Sriraj, please come forward. Sriraj, of course, Sriraj is, yes, Sriraj, one more, the good umpire, done a great job for the success of this cricket tournament. Sriraj avarige jorada chappale barli. The wonderful work done by the three officials in this particular tournament. Now it's a time to ask the voice, which is required for the success of a cricket tournament. I request Syed Guru Kamla, please come forward. Wonderful in the commentary, done a great job. Is came from long way from Guru Kamla to our UCGK ground, so they really entertained the crowd with the excellent cricket commentary. Syed Guru Kamla sir avarige jorada chappale barli. Excellent commentary from Syed Guru Kamla. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೋರರ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, Ratish Raj, done a great job because it's not an easy job being the scorer, done a great job. So big hand for Ratish. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ರತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರತೀಶ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. And it's none other than one of the popular YouTube channel, Bedra Media. May I request Irfan to come forward to collect your memento from our chief guest. The more than 90k viewers enjoyed this Nehru Cup 2022. At the same time, I request Rolson, the son of Roland Pinto sir, he is also one who is responsible for the success of this cricket tournament in the scoreboard. So very young, talented Rolson. The big hand for Rolson. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಆದಂಥ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ರಜನೀಶ್, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ರಜನೀಶ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ದ ಬಿಗಿನ್ ಫಾರ್ ರಜನೀಶ್. One more person behind the success of this cricket tournament, behind the screen, Latish of UFCA. May I request Latish, please come forward. Latish, the wonderful cricketer, the very good commentator, and hard worker as well. Done a great job for the success of this cricket tournament. He will go in to collect memento and honor from our chief guest. Thank you very much, Latish, for your contribution for the success of this tournament. And at the same time, I request the photographers, they are the one is taking the lovely moments of this cricket tournament, Nehru Cup 2022. And thank you very much, sir, for your wonderful work. I request one more important person. ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ this cricket tournament. I request on behalf of a sound system, Vasant will going to collect the memento from our chief guest. Big hand for Vasant for the wonderful sound system. Thank you very much for your contribution. And finally, we are coming to the very important part of this cricket, because cricket means discipline. Discipline means cricket. Without discipline, it's, I think, very impossible to organize the cricket. And best discipline of this tournament, best discipline team of this tournament. Any guess? Yes, everyone is a very disciplined, but more discipline we have observed from the team Dongarakeri Challengers. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದಂಥ ಡೊಂಗರ್ಕೇರಿ ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಆಟಗಾರರು, ಎನಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಓನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್. Yogesh Nayak, and big hand for Yogesh Nayak. His team is came into the semi-final. It's not lesser than the final, because done a great job, hard work for the big semi-final. Thank you very much, sir, for your contribution. Now it's going to be the big final. Of course, unfortunately, the match is a little bit one-sided, but both the teams really played a magnificent game of cricket. The big hand for United Ashok Nagar as well as Bandar Brigade. They played a very good game of cricket, and winning and losing is a part of cricket, but they won on the heart of cricket lovers. That's 100% sure. So now it's a time to announce the man of the match of the big final. Any guess? Absolutely no doubt at all. It's Ajay for his all-round performance. May I request Ajay to come and collect the man of the match award. It's a hunting ground for Ajay. I think this is the second time he is winning that man of the match in this particular UCG cricket ground. After he is winning for Sarvagni cricketers, represented for Sarvagni cricketers, now he is representing his war team. What a fantastic tournament he's got from the ball and the bat. And Ajay, poor Ajay gonda enan mulpa gida pair. So, of course, the letter which starts from A, second letter B, absolutely it's Abhilash. He is the best batsman. The cash prize of rupees 3,000 with the very, very attractive individual. Yes, best batsman award for Abhilash. The stylish, technically sound left-hand batter Abhilash deserves this best batsman. Now coming to the king of individual prizes. Individual prize na Raja anta helbodu. The man of the series is not so easy to lift. Yes, one who deserves this man of the series. Yes, Bandar Brigade ನವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಜಯ್ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಬರ್ತುಂಟು. Yes, the letter which starts from 3TT. It's a Trishant, the man of the series, the man with the golden hand. The 3,000 cash prize along with the Ray-Ban glass, the cost of 5,000.
which is donated by Uday Acharya. And Trishant is a man of the series. What a fantastic tournament he's got. From the bat, from the ball, and even in the field as well. He's definitely deserved this big man of the series. Trishant, what a tournament he's got. And they played a magnificent game of cricket. ಅವರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Absolutely 100% is a full package. So now it's a big time, and at two teams which just came into the final, and of course United Ashok Nagar not really managed to win the match, but they won the runner-up. And I request all the teammates please come forward because everyone has got a medals. ದಯಮಾಡಿ ಓನರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೆಡಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಚೇತನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಡಲ್. It's a big hand for runner-up of Nehru Trophy 2022. ದಯಮಾಡಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಟಗಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕು. So here we go. The two pillars of this tournament will go into present along with the chief guest Rakesh Devadiga and Prakash B. Salyan along with all the dignitaries. They're going to present this runner of Nehru Cup 2022 with the cash prize of rupees 33,333. So congratulations United Ashok Nagar. Yes, they are the runner-up. Now, we are into the one of the biggest and most awaiting moment of this tournament. The champion, before I calling this champion to the dais, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಲ್. ನಾವು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Those who won the toss, they won the match. But here, the winning team winning all 4 toss and they won the match. So this is none other than the champion of Nehru Cup, Bandar Brigade. So Bandar Brigade will go in to collect the Nehru Cup Champions Trophy 2022. Here you go. Champions will go in to collect the medals first. Please collect your medals first. Then definitely we have got a photo session with our chief guest. The cash prize of 55,555. 5555. All fives. So here you go, the champions of Nehru Cup 2022. The congratulations for the winners. They really played like a champion. They deserve this place where they came into the final. And outstanding performance against the formidable team United Ashok Nagar.
and they won the heart of cricket lovers and winning the 55,555 rupees cash along with a very attractive Nehru Cup 2022. The biggest moment of this tournament, the champions of Bandhas Brigade. So special thanks to the spectators, those who are here supported for this wonderful tournament. They came in a large number, even in a late night. They are really being the part of this cricket tournament. So on behalf of organizer, I would like to give special thanks to the spectators, wonderful spectators of UCG Cricket Ground. Thank you very much, everyone. Congratulations for the winners and the runner-up. And thank you very much, Rakesh Devadigas, as well as Prakash B. Salian, for this wonderful opportunity being the part of this successful Nehru Cup 2022. It's over to Sunil. Thank you very much. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಹರು ಕಪ್ 2022 ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ಉತ್ತಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಕೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ